Veda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing.
Hello, check. Hello, mic check. Yes, a very good evening and the warmest welcome to match number 34 of the Lakshmi Leela Group GSC 45 plus T20 League. This happens to be the signature event at the Goregaon Sports Club. With this kind of senior cricket event, we really set the benchmark in the city of Mumbai as far as the senior cricket is concerned. Tonight it's going to be Team Gangsters versus Team Superstars. Team Superstars is nicely placed at the number 4. On the other hand, Team Gangsters, they lost a very crucial match the last time they played a match out here, and that is why they are in big time trouble. They are at 3 wins and 4 losses after having played 7 matches. So it's going to be a tough ask. As far as the toss boss is concerned, we've got our convener of the event, Prasad Karkera, and Monish Shah. Heads and tails. Tails is the call from Gangsters, and it is tails. Paji, quite an important toss to win. Although you are going through tough times, but you would like to give a very good account to yourself and show to the GSC what Gangsters is made up of. Sir, when going gets tough, the tough gets going. So there is no tough time. Every time is good time. We are enjoying our cricket. And I hope the same for them also. They are a very good team. So is our side is doing also very well. I think crucial matches, everybody loses 1 or 2 here and there. And this is going to be a crucial match for them as well as for us. Because if we win, our chances also get opened up. Because we will be coming in tied with them at 8 points. Maybe the run rate will become a crucial factor. But I think they are a good side. We wish them all the best. और pitch बहुत ही अच्छा है. देख के हमारा मतलब पहले देखते ही हमारा बैटिंग करने का दिल है. But हम bowling करेंगे. So yes, Team Gangsters having won the toss, they've inserted Team Superstars in. We have with us the captain of Superstars Cricket Ki Pathshala, that's Dipan Patel. Dipan, very important game for you. You all are placed at the number 4 spot. Ideally, you want to occupy a position amongst the first 2 teams so that even if you happen to lose that qualifier number 1, you get one more shot at going the distance. So you're going to be batting first. What's the score you want to be putting on the board? This is one of the most important games for you tonight. First of all, I wish your team all the best. And whether batting or bowling, our focus is just one, that we have to make sure that we win this game because we want to go higher up in the table. Score does not matter in this game because at the end of the day, our points will count to make us go ahead. So, and also we have one more game, so I think we should win this game. Yes, as always, so we line up for that team snap. It's time for both the teams to align together and then we pay that tribute to the national anthem. Yes, Team Gangsters, you guys do not need a second invitation. Half the team kneels down. Kuldeep sir, can we please have you with us? One of our senior most statesmen. That's Kuldeep sir. Sanjeev Mahajan, make it fast. Drop your bag right there. आजा संजू आजा. Yes, as always, so whilst the toss ceremony, we aligned together. Great camaraderie being shared here amongst the different teams at the GSC. Can we have the thumbs up? Ganpati Bappa! We pay our tribute to the national anthem. Caps and hats off. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा.
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की वंदे। Namaskar, Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam, Kem Cho. A very good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to match number 34 of the Lakshmi Leela Group GSC 45 Plus T20 League 2025. This is season number 7 and we are making rapid strides towards the business end of this GSC 45 Plus T20 League. Tonight it's match number 34. A total of 47 matches to be played in this game. It's a cracker of a game. That is Team Gangsters and Team Superstars. Quite an important game for Team Superstars as they will be looking to notch up those 2 points and get to those 10 points on the board. Ideally, the top 3 teams, they would like to be ending up at the number 1 or the number 2 position. Team Challengers is occupying that number 1 position and looks like they're going to be safeguarding their number 1 position because that's the only team which has a 100% winning ratio and it's going to be almost impossible to get to that tally. So the fight will be for the number 2 spot and that fight is going to be between the teams that are placed at the number 2 spot, number 3 spot and the number 4 spot. Ideally, the number 1 and the number 2 teams, they get one more shot at going the distance because if we happen to lose that qualifier number 1, you get one more shot at going the distance. So quite an important game for Team Superstars. On the other hand, as Karan Paji mentioned that if they get to number 8, maybe there will be some juggling on the points table. That's the beauty of the round robin league format. The biggest thank you to our title sponsor, Shri Praveen Kothari, Lakshmi Leela Group, a venture by Praveen Kothari. The associate sponsors, Rhythm Mobiles, Jensen LED Lights, Gandha Royal Refinery, Comfort Group, and of course, PCPL. The biggest thank you to all the sponsors for being such a great support system to the cricket committee of the Goregaon Sports Club. A big thank you to all the viewers associated with this event on the Facebook page of the Goregaon Sports Club or YouTube. Keep showering that support and patronage. We look forward towards it. The viewership graph in this tournament has been on the high. So just requesting all of you to please keep supporting us the same way. We've got 13 more matches left in this tournament. Thank you to all the YouTube viewers. We joined with live action at 7 p.m. sharp. 6:55, the 2 umpires take the field. Team Gangsters have won the toss and they've decided to bowl first. It's going to be the batting duo of Team Superstars to make first use of the wicket as a batting unit. Thank you. This is your host and those Nishat Kora signing off for the moment on behalf of the Cricket Committee of the Goregaon Sports Club. Thank you. God bless.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Hello, hello, hello. Hello. Good evening and a warm welcome to match number 34. Team Gangsters have been invited to bat first after losing the toss. It's going to be Santosh Mane to be bowling from the far end. The man on strike, Prashant Desai, and to give him company at the non-striking end, it is Munir Chandiwala. Lights, camera, action. Let's rock and roll. Play time. The back of length delivery, very slow to the air, nicely getting onto the back foot and putting the ball away into that point area. The first runs on the board coming off the blade of Prashant. He's been in decent form, and look at this man, Munir Chandiwala, definitely one of the key players for Team Superstars. One of the key all-rounders at the tournament. The kind of form that is exhibited in this tournament, that has been fabulous. The fact remains that he's presented the best version of himself in this tournament. And if we can continue that same way, it's going to be a big blessing in disguise for Team Superstars. Nicely leaning into that shot, although he committed himself a little too early, but nicely caressing that ball into that extra cover region. He too is off the mark. The primary job for Santosh Mane is to put the ball into that corridor of uncertainty. The ball is wobbling just a wee bit. This time a little quicker to the air, bending his back and nicely nudged around the corner. There's nobody in that position. The first rhythm mobiles boundary of the evening that comes off the blade of Prashant Desai. He exactly knew where the field was set for him. That's the hallmark of a very good player. And this man has been in such good form in this tournament. He's really played a good hand, and the fact that Team Superstars is in this strong position, this man has had a big role to play, Prashant Desai. A good timing and the placement also spot on. A good bit of work by the man in that
Deepish extra coverage and happy with the single. That single takes the score to 7. 1 ball left in the first PCPL over. Oh, that's a rank bad delivery. Fortunately for Mane, that is put away only for 1 run. Ideally, that delivery should have been put outside the park. Missed opportunity. The score at the end of the first PCPL over, ladies and gentlemen, boys and girls, that's 8 runs for the loss of no wickets. पहला कदम उठा विमान से सपनों की क्या मजाल के पूरे न हो. इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा. बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है टीम सुपरस्टार्स के लिए. किसी भी हाल में इस मैच को जीत कर वो पहले 2 पोजीशंस में जाना ये बिल्कुल अनिवार्य. अच्छी गेंदबाजी ने अगर इंपैक्ट क्रिएट कराना है इस मैच में तो फिर अच्छी फील्डिंग की बैसाखी भी उपलब्ध करानी होगी. बड़ी शिद्दत से फील्डिंग करनी होगी. You got to put in more than 100%. Each and every run saved is like a run scored, and at the end of it all, it could be a big difference. It could be a difference between a victory and defeat. Nicely getting on the top of that one, equally well fielded. That's Indrajit Vachar. As I've been mentioning right to this tournament that Indrajit Vachar has a good look around him. He's putting in more than 100% in all the 3 departments. And his stocks are on the rise. Once again, a full tosser delivery that is straight into the hands of Karan Singh Walia in that orthodox mid-off position. Now this is a golden chance for Sushil as is. अच्छी पोजीशन में आए. हालांकि वो गेंद शरीर के बहुत ही नजदीक थी. उस तरह के शॉट को खेलना यानी कि कयामत को न्योता देने जैसा है. लेकिन इतने अच्छे फॉर्म है इस पूरे टूर्नामेंट में कि बहुत ही सटीक पोजीशन में आकर अच्छी तरह से उस गेंद को नेगेट किया. That's the sign of a man in confidence, man in good touch. फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा छोटी गेंद और काफी वाइड भी थी. Sushil has to put the ball into that business area. He's got to ask questions of the batters with his immaculate pitching. He cannot waste the new ball. Early days in this match, and both the teams will be more than keen to exhibit that good intent, because good intentions die if they are not executed. Ample time for the स्ट्राइक पर होंगे प्रशांत. That's an incredible batting lineup that they have, Team Superstars, and so does Team Gangsters. They look so well balanced on paper.
Warmest of warm welcome to one of our marquee players, that's Himal Dave. A little upish, but the moment it went past Indrajit Vachar, that it had a Rhythm Mobiles boundary written all over it. The good thing in that shot was that Prashant did not hold himself back. No half measures. He went all out after it. Definitely Prashant Desai has presented such a good version of himself, almost the best version of himself. This is like a vintage Prashant Desai playing this tournament. That must have slipped out of Mane's hands. You got to strike a good rhythm early on. There is no room for error in this kind of a T20 game. Well played. That's a good looking off drive. And an ordinary piece of fielding by Karan Singh Walia. That will result in a Rhythm Mobiles boundary. The second of the over. Munir Chandiwala up and away with that wonderful cover drive. It's been such a treat to watch Munir in this tournament. He plays with so much of panache. So pleasing and soothing to the eyes. Isn't it, Kuldeep sir? The way Munir is going about things. The last match he got out quite early. That was almost like the only blip in this season so far for Munir, the batsman. बड़े रनों की पाइपलाइन को यहीं पर काटना होगा टीम गैंगस्टर्स ने. अच्छी कमिटमेंट. मुकेश चावला. इस सीजन में मुनीर की एक अलग शानो शौकत रही है. The ball kept just a wee bit low, just a wee bit low. That's a good channel to be bowling into. Channel bowling, metronomic bowling. Mane will have to be more consistent with his landing of the ball. और एक खराब गेंद आज किसी भी तरह से लय प्राप्त नहीं की है माने. उस खराब गेंद को बिल्कुल सही अंजाम तक पहुंचाया. वो गेंद थी मुनीर के चरण में, जा पहुंची बाउंड्री लाइन के शरण में. देखते ही देखते रिदम मोबाइल्स चौका दर्ज हुआ टीम सुपरस्टार्स के खाते में. रन संख्या जा पहुंचती है 3 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 25 रनों पर बिना कोई नुकसान के. हमारे फिजियोथेरेपी पार्टनर वी वेदा क्लिनिक, डॉक्टर वेदिका जुठानी. जिस तरह की शुरुआत की अपेक्षा कर रहे थे दीपन पटेल, उसी तरह की एक अच्छी शुरुआत हासिल होती हुई. हालांकि इस वक्त किसी भी तरह से भविष्यवाणी नहीं करना चाहेंगे, जल्दबाजी होगी. ऐसी आशा करेंगे कि एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट मैच हम सभी को देखने को मिले. एकाग्रता, आत्मविश्वास और ताकत का त्रिवेणी संगम इस वक्त मुनीर और प्रशांत दोनों ही दर्शाते हुए इस टूर्नामेंट में एक 90 प्लस की साझेदारी निर्मित हुई है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच. 90 प्लस की एक साझेदारी दर्शाई है. दोनों ही बल्लेबाज का आपसी तालमेल भी बहुत ही बढ़िया है. एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं.
करीबन हर मैच में ये दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी को ओपन किया है। बिल्कुल सेटल्ड ओपनिंग पेयर है, किसी भी तरह से कोई चिंता का विषय नहीं है टीम सुपरस्टार्स के लिए ओपनिंग बल्लेबाजों को लेकर। दैट्स अ वेरी सेटल्ड ओपनिंग पेयर and the batting order indeed runs deep for team superstars. They are indeed a champion outfit. Sushil will continue. Well ball. That is where you want the ball to be landing at least 4 or 5 times in an over. Sushil will have to get that consistency into his bowling. That's equally well played, giving the due respect to that reasonably decent delivery, getting right behind the line. पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। देखिए गेंदबाजी को बिल्कुल मेरिट पर ट्रीट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, अभी तक कोई भी फॉल्स स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। इसके बावजूद अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स के चलते एक अच्छी रन संख्या के साथ आगे बढ़ते हुए एक अच्छी रन रेट के साथ 26 बिना कोई नुकसान के। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बस ठान किया है प्रशांत देसाई और मुनीर इस सीजन में कि हम ज्यादातर हर मैच में एक अच्छी शुरुआत उपलब्ध कराएंगे अपनी टीम को, ये ठान कर आए हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। और एक रिदम मोबाइल्स की प्राप्ति होती हुई ये सटीक रिदम मोबाइल्स चौका मुनीर के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। तकनीक का दामन थामे रखते हैं मुनीर। सभी को मंत्रमुग्ध किया है इस टूर्नामेंट में अपने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ। He's mesmerized everybody, one and all. He's been in dazzling form. कोशिश जारी रखनी होगी गैंगस्टर्स ने। देखिए इतने अच्छे फॉर्म में है कि वो हल्की सी गेंद नीचे रहे, उसके बावजूद सही वक्त पर अपने बल्ले को नीचे लाए मुनीर। Is sighting the ball as big as a football. That is a testimony to the fact that this man is in silken touch right to this tournament. He's exhibited very good batting temperament and sound technique. The temperament and technique have been married to each other as far as this man is concerned. Nicely played, nicely leaning into that shot. Although not literally bending into that shot, not the ideal weight transfer, but a very still head and a high elbow. So that's well played, offering the full face of the bat. The score at the end of 4 PCPL overs, 32 for no loss. They are looking to set a rock-solid foundation. That's a very good partnership that is starting to assume dangerous proportions, but still a long way to go. Early days in this match. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें ये बिल्कुल गलत बात है। तो कोशिश जारी रहेगी करण सिंह वाले और टीम गैंगस्टर्स की। हमेशा करण सिंह वाले कहते हैं कि वी आर गैंगस्टर्स एंड वी विल प्ले लाइक गैंगस्टर्स, और ज्यादातर दबंग भरा क्रिकेट खेलते हैं करण सिंह वाले और उनकी टीम। बड़ी दबंगाई के साथ हमेशा पेश होते हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। अब गेंदबाजी की बॉलिंग बैटरी की अगली कड़ी के रूप में आजमाइश होती हुई अनिल जैन की इन्फिनिटी एंड की तरफ से। बस सही जगह पर गेंद को लैंड कराना है। रिलीज के ऊपर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना होगा अनिल ने।
अनिल कभी भी ज्यादा तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने की कोशिश नहीं करते हैं। मिलिट्री लाइन एंड लेंथ, सटीक नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी। इस बीच टीम टाइगर्स के कोनर उदय भाई जैन का यहां पर आगमन होता हुआ। उदय भाई जैन का स्वागत है। दूधिया रोशनी में नहाता हुआ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का ये मैदान बहुत ही सुंदर दिखता हुआ, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन जैसा। हमारे मुंबई के इस परिसर में सबसे बेहतर ग्राउंड है ये वाला। प्रशांत को देख लीजिए, ज्यादा लीन नहीं होते, उनका जो अपर बॉडी वो ज्यादा नीचे नहीं आता है, लेकिन वो सर बहुत ही स्टेडी होता है, शरीर के नजदीक खेलते। अगर थोड़ा सा शॉट्स में और लीन कर जाएंगे तो और भी बेहतर टाइमिंग प्राप्त होगी। थोड़ा सा शायद बैक प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से वो ठीक तरह से अपने शॉट्स में झुक नहीं रहे, लीन नहीं कर रहे। अपनी 5 पहली गेंदों पर 4 रन से दी अनिल जैन ने। 5वें पीसीपीएल ओवर की आखिरी गेंद दोस्तों। एक सम्मानजनक ओवर मुकम्मल किया अनिल जैन ने। 5 पीसीपीएल ओवर्स के बाद रन संख्या है 36 रन बिना कोई नुकसान के। That's a good looking cover drive, but could not pick his spot. That went straight to the fielder in that extra cover region at the edge of the circle, inside the 30-yard circle. Oh, he goes fishing outside the off stump, almost a nothing shot, just poking at it. That's a good channel to be striking into. Just a little bit more consistency Sushil will have to get into his game to be a handful with the new ball. He's got the potential. अपनी गेम को थोड़ी सी और धार देनी होगी सुशील ने। कमिटमेंट को लेकर, डेडिकेशन को लेकर सुशील पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उपस्थित हो सकते उनके कमिटमेंट को और डेडिकेशन को लेकर। थोड़ा सा गेम को एनहांस करना होगा।
अच्छी टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग. वो गेंद चीरती हुई निकली थी, लेकिन स्मार्ट फील्डिंग. मानो या न मानो, संतोष माने है वहां पर. अच्छी फील्डिंग. संतोष यहां पर अविनाश मयंकर है. यस करण पाजी, माफ कीजिए. अच्छी फील्डिंग मयंकर की. थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और फिर से एक बार अविनाश मयंकर एक्शन में. बढ़िया शॉट. देखिए कितनी सटीक तरीके से अपनी क्रीज की डेप्थ को यूज किया था. बड़ी बढ़िया तरीके से उस गेंद के ऊपर आए, स्लैश किया. लेकिन उस अच्छे शॉट के लिए केवल एक ही रन प्राप्त होगा. रन संख्या 40 रन से बिना कोई नुकसान के. पीसीपीएल पावर प्ले की आखिरी गेंद दोस्तों. थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था और लगातार तीसरी बार वो गेंद अविनाश मयंकर के हिस्से में गई. 6 ओवर्स के बाद 41 रन बिना कोई नुकसान के. हालांकि धीमी शुरुआत है, लेकिन मजबूत जमीन पर नजर आती हुई टीम सुपरस्टार्स. इसी तरह की शुरुआत की दरकार थी कि विकेट्स न खोए पावर प्ले में. जब पावर प्ले में आप विकेट्स नहीं खोते हो तो पावर प्ले के बाद सीधे सीधा मेन लीग प्लेयर का आगमन हो सकता है विकेट पर. और इससे बेहतरीन बात किसी भी बैटिंग टीम के लिए ये नहीं हो सकती. तो एक अच्छी शुरुआत है. तकनीक को किनारे न करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी रन रेट के साथ अपनी इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करते हुए, इस इनिंग्स को अच्छी दिशा देते हुए, सकारात्मक तरीके से इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए. अब तक तो पहले 6 ओवर्स में इस मैदान के चारों तरफ अपने अच्छे रनों की रंगोली को सजाया है. 7वें ओवर को लेकर इंद्रजीत वचर की आजमाइश होती हुई इन ऑर्बिट हैंड की तरफ से. At times, Indrajit Vachar has looked smoking hot. Sometimes he's looked a little ordinary. But yes, what a way he's turning around the corner. Definitely, he's taken his game from large to extra large. And he's been one of the most improved players in this tournament, along with Jitendra Gupta. The most improved player this tournament, that's Jitendra Gupta. Indrajit Vachar not too far behind. Ample time for Muni to go on the back foot and just tap it away. Tap and run. Tap and run is the strategy employed by Munir at the moment. Always an exciting prospect when a leg spinner comes into action. Managing to induce the outside edge. Well fielded by Ashish. He'll have a big role to play in the second half when he comes into bat as the opening batsman. Is one of the most entertaining batters at the tournament. That's Ashish. What a fine player, a super batsman. Oh, well bowled. What a delivery. That's a japper. That's a peach of a delivery. Superbly bowled. Not much
conviction in that appeal, more of enthusiasm. उस अपील को खारिज किया. स्लो टर्न पुल किया है वाइटिश मिडॉन के क्षेत्र में. 1 रन की बढ़ोतरी. इस बीच स्वागत है हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर और वॉलीबॉल डिपार्टमेंट के चेयरमैन सतीश अग्रवाल जी का स्वागत है. नरेंद्र जडेजा उर्फ बापू. इनके महेश्वरी का आगमन होता हुआ. अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की इस पहले ओवर में. इंद्रजीत वचर के पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम के लिए रन संख्या 45 रन से बिना कोई नुकसान के अच्छी शुरुआत हासिल की. अच्छे रिदम में नजर आए इंद्रजीत वचर. सबसे बढ़िया बात टीम में सुपरस्टार्स के लिए यह है कि विकेट्स कॉलम में वो 0 नजर आता हुआ. मुकेश चावला को गेंद थमाई है. That was too short and wide. That's a reasonably good stop by Karan Singh Walia. If that had to go past him, would have been a rhythm of his boundary. They have a protection in the deep. That's Anil Jain in that backward of point area. Early days in the spell for Mukesh. Better line. Two leg spinners bowling in tandem. Indrajit and Mukesh. Inviting the batsman to play that big shot. Munir stepping down the wicket but overreaching. And that is why the timing was not there at all. 48 for none. Once again too short and wide. That's a good backup job by Karan Singh Walia. One ball left in over number 8. The scoreline reads 49 runs for the loss of no wickets. They're laying a good foundation. $50 runs up on the board for Team Superstars in decent time. Although it's not an explosive start, but quite a tidy one as they've got all wickets in hand. The ideal foundation has been laid. Maybe that message going from Captain Abhay to step on the pedal. Oh, well bowled. ना कहा लेग अंपायर गुरु सर ने.
उस पहले विकेट की खोज में इंद्रजीत बच्चर, दौड़ लगाई है वहां पर अनिल जी ने, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया रिदम मोबाइल्स बाउंड्री आमंत्रित किया था इंद्रजीत बच्चन ने बल्लेबाज को कि वो बड़ा ड्राइव खेले, और ड्राइव खेला भी, लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से, कोई भी मौका नहीं दिया। अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट उससे भी बेहतर, फलस्वरूप एक शानदार रिदम मोबाइल्स चौका। 54 रन बने हैं। प्रशांत देसाई ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ मुनी ने 24 गेंदों में 25। अच्छी गेंद और थोड़ा सा पिछले खेलने में मजबूर हुए थे। साधारण फील्डिंग, बल्कि मैं कहूंगा खराब फील्डिंग। 2 गेंदों में 2 रिदम मोबाइल्स चौके। बड़ी राहत की सांस ली होगी टीम सुपरस्टार्स ने उन 2 चौके के साथ। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए 2 तेज-तर्रार रिदम मोबाइल्स चौके। नाउ इज लुकिंग टू स्टार्टिंग टू लुक स्मोकिंग हॉट। प्रशांत अपनी रेपुटेशन को और बुलंद किया है और मजबूत किया है प्रशांत देसाई ने इस सीजन में। इस सीजन के बाद सीनियर क्रिकेट में किसी भी लिहाज से प्रशांत देसाई कोई हल्का फुल्का नाम नहीं होंगे। उन्होंने बतौर एक रेगुलर ओपनर अपनी जगह बनाई है। He's earned the stripes, to tell you the truth. अपने कौशल्य का बहुत ही अच्छा परिचय दिया है प्रशांत ने। ज्यादातर टीम की परिस्थिति को जानकर अपनी गेम को अच्छे ढांचे में सजाया है, संवारा है। उस लिहाज से कहना होगा कि बिल्कुल टीम के लिए एक बड़ा एसेट उभर कर आए प्रशांत। वाइड गेंद, $64 none. They already have a 90+ partnership. The day they had registered that 90+ opening partnership, both the batters, the way they were stepping up on the pedal, the way they were building the momentum, they were so clinical. And tonight as well, they already have put on 61 runs on the board of 9 overs. Although the current run rate is less than 7 in over, all wickets in hand. अगर हकीकत के तराजू में अब तक के मैच को तोले तो कहना होगा कि हल्का सा पलटा भारी है टीम सुपरस्टार्स का, हल्का सा, क्योंकि सभी विकेट्स हाथों में। लेकिन दाद देनी होगी टीम गैंगस्टर्स की भी कि उन्होंने काफी हद तक नियंत्रण में रखा हुआ है टीम सुपरस्टार्स को। 2 धारी तलवार है ये वाला मैच। At the very start of the match, we have our pillar of strength, the deputy to Kaushik Bhai Mehta. That's the convener of the event and the co-owner of Team Panther Kings, Prasad Karkera. And one of our key organizing committee members, that's Monish Shah. Welcome to Alpesh Shah. Looks like Himal Dave has come straight from office. Introducing himself into the bowling attack at the stroke of the drinks interval. Not a bad idea from Karan Singh Walia. स्वागत है परमिंदर बामरा जी का।
Welcome to Mrs. Ashu Sharma. Over number 10 underway. It's going to be the drinks interval after this one. Oh, well bowled. That's the perfect line. That's the perfect channel. Metronomic bowling. 30 balls is what Prashant Desai has faced so far. The final 6 balls to come in this innings of, or rather the quarter of Desai. That kind of a shot can be played only by a man who is in good touch, who is seeing the ball as big as a football, because that was too close to his body to be playing that kind of a cut shot, but nicely done in the end. He goes aerial. One bounce to the man in that long on position. A bit of a fumble enabling the batters to take that second run. 2 balls left in the over before the drinks interval. That's 66. Oh, such a good nudge around the corner. We'll have to wait and watch. Looks like there's no need to run for that one. Oh, in fact, the ball is held up. Oh, it touches the boundary rope. Just about. It has got just enough gas on it to touch the Rhythm Mobile's boundary fence. Almost reading the mind of Karan Singh Walia. He got into a good position quite early. That's Munir. Munir is on to 33 of 28 balls. He knew where the field was set for him. That's a very smart shot. A minimum effort and a premium result. Pachi gets his hand to it. It's the drinks interval. The score after 10 PCPL overs, that's 71 runs for the loss of no wickets. A rock-solid foundation. Maybe it could be a case of 8 to 10 runs, a little less, but never mind. They've laid a rock-solid foundation. How much time they've taken? 45. 41 minutes is what Team Gangsters have taken. So well done, guys. Only 41 minutes is what they've consumed. Time for a short promotional break. Over to Akash Singh from Promo Productions.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो. Munir on strike is faced 29 balls so far. In a slightly awkward position, but just look at the way he put that ball into that backward square leg area. Munir has faced 30 balls. 31 is what Prashant has faced. Any batsman after having played 36 balls will have to retire. Oh, that is such a good looking shot. We'll have to wait and watch. Falling well short of Mane. Not enough elevation on it. We'll have to wait and watch. No, says Guru sir. The 11th PCPL over underway. Munir on to 35 of 30 and Prashant on to 26 of 32. That's a 74 runs unbeaten partnership. The change in pace from Anil, putting the ball into that long off area. One more couple collected. Just look at the fitness of Munir. So he's excelling in all the departments, not just the batting, bowling and the fielding. He's putting a lot of emphasis on staying fit, and that is why the desired results on the cricket field. There's no doubt that both these batters have matched each other shot for shot.
Both have looked smoking hot. In fact, that's a one-run shot. So only one run added. Oh, that is Comfort Group 6. What a way to almost get to those 36 balls. He's on to 43 of 34 with that Comfort Group 6. I just saw a GC member, Mr. Anil Agarwal from the Comfort Group, who is the sixth sponsor. The warmest of warm welcome to Mr. Anil Agarwal, the Governing Council member at the GSC, and also the sixth sponsor. The final ball coming up in the court of Prashant. If he would have held his ground, maybe that would have been a half volley. चार रन मिले. चलिए चौके के साथ अपनी इनिंग्स को समाप्त किया. 47 रन्स बने हैं टीम सुपरस्टार्स के सुपरस्टार बल्लेबाज प्रशांत देसाई के लिए. 36 गेंदों का सामना किया. रिदम मोबाइल्स चौका. 11 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 85 रन, 1 विकेट के नुकसान पर क्रीज से दामन छूटा है प्रशांत देसाई और आगमन होता हुआ कल्पेश दोषी का. जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट, क्योंकि ये हमारे स्कोर शीट में रिटायर्ड आउट के रूप में दर्ज होगा. बहुत ही अच्छा योगदान. ये अच्छी बात है कि टीम सुपरस्टार्स के प्रीमियर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है. बड़ी तेज रफ्तार से बिजनेस एंड की तरफ ठोस कदम उठाती हुई टीम सुपरस्टार्स. ऐसे हालात में जो टीम सुपरस्टार्स के की प्लेयर्स है उनका अच्छा फॉर्म में बने रहना बहुत ही जरूरी है. 30 में 35 बनाकर मुनीर अपनी इस इनिंग्स को सही मायनों में अच्छी दिशा देते हुए और अपनी टीम के लिए भी एक अच्छा मोमेंटम गैदर करते हुए उस एरिया में अविनाश ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है. मुनीर चांदनीवाला अपनी इनिंग्स की आखिरी लम्हों में है. उसके बावजूद देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स, गत 5 गेंदों में 3 बार वो सेकेंड रन लिया है मुनीर ने. उनकी अच्छी फिटनेस का ये सर्टिफिकेट है. पुलिंग इट इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर. 32 गेंद खेल चुके मुनीर. वेल बॉल्ड चैनल बॉलिंग. कुलदीप सर, ये दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने तीसरी बार इस टूर्नामेंट में 85 या 85 से अधिक रनों की पार्टनरशिप की है. 97 की पार्टनरशिप, 96 की और आज 85 की. तो टीम सुपरस्टार्स जो यहां तक पहुंची है, दीपन भाई, शुक्रिया अदा करना होगा आपकी इस सलामी जोड़ी को. कितना 2 गेंद शेष है 12वें पीसीपीएल ओवर में.
Into the pads. 1 run in the form of a leg by. Three balls left in that quota of deliveries for Chandiwala. Kalpe Doshi absolutely new at the wicket. The barometer for a judgment in this kind of a T20 game will always be the fielding of both the teams. So far, Team Gangsters have really fielded brilliantly. It's been more than a decent performance in the field by Team Gangsters, led by Avinash Mahinkar, Mane. Score after 12 PCPL overs, that's 92 for 1. Changing ends for Vachar. And what a welcome to the wicket. That's a smashing rhythm mobiles boundary. There has been only 100 plus batting partnership in this tournament, and that came off the blades of Saket Adhikari and Vijay Singh. 100 plus partnership in this tournament, only one. As far as the opening pair of Team Superstars is concerned, one partnership of 97 runs, another of 96, and tonight 85. Mind-blowing, mesmerizing. Oh, that is such a good timing, but an equally well fielded by Gopal Bhai. The last ball. .98 for 1. Munir is facing his last ball. He's on to 44 of 35. After that blip in the earlier match, he's back to where he belongs among some very tidy runs. Easy pickings. That is the half century for Munir Chandiwala with that flat comfort group 6. Unbelievable knock from Munir Chandiwala. Come at the hour, come at the man. 100 runs up on the board. So everything falling in place for Team Superstars after being invited to bat first. On his way back to the pavilion, that's Munir after registering a half century. Jensen LED Lights, Gandha Royal Refinery wicket. And in comes Manish Sharma, one of the co-owners of the team. One co-owner departs and the other co-owner arrives at the wicket. They are in a very happy space at the moment, Team Superstars. Dipan Patel, the ownership stakes, and the think tank will be more than happy as to what they have achieved on the cricket field so far. One more very good knock from Munir, and he comes back to a standing ovation. That half century from Munir was the 36th half century in this tournament. We are into match number 34. So half century almost every match. Oh, super timing once again. No need to run for that one. That is quite an expensive over from Indrajit Vachar in the post-rings interval. They are taking him on. That boundary comes off the blade of Manish Sharma. He connected that delivery as if he was playing on a 40 not out. That's the way he plays.
Oh, this is easy pickings, easy meat for Manish Sharma. थोड़ी सी साधारण गेंदों की सौगात देते हुए मनीष शर्मा को और उस गेंद को सही अंजाम तक पहुंचाया और एक कंफर्ट ग्रुप 6 रन संख्या टीम के लिए 114 पर जा पहुंची है। ये चौथा इनिंग्स है मनीष शर्मा के लिए। पहले इनिंग्स पर 1 पे आउट हुए थे, दूसरे इनिंग्स में 33 बनाए थे, तीसरे इनिंग्स में 28 बनाए थे और आज एक अच्छी शुरुआत की है। अच्छी शुरुआत को एक शानदार नॉक में तब्दील करना अब ये उनका परम कर्तव्य है। चौबीस रन मुकम्मल हुए इंद्रजीत वचर के उस ओवर में। बहुत ही महंगा ओवर, मैच का पासा पलटता हुआ, मोमेंटम गैदर कर चुके फिर से एक बार टीम सुपरस्टार्स। अभी तक जो भी कुछ देखा था वो फूल जड़ी थी और अब आतिशबाजी देखने को मिलती हुई टीम सुपरस्टार्स की तरफ से। गत 30 गेंदों में 66 रन बने हैं टीम सुपरस्टार्स के लिए। देखिए किस तरह से मोमेंटम को बिल्ड कर रहे, एक सोची समझी साजिश के तहत इनिंग्स को बिल्ड करते हुए सटीक तरीके से। मनीष भाई गोपाल भाई को कहेंगे कि दूसरी इनिंग्स में भी इसी तरह से फील्डिंग कीजिएगा गोपाल भाई। क्या कमिटमेंट है गोपाल भाई का, वो हमारे वाकई में एक ब्रांड एम्बेसडर है। क्या बात है, कमिटमेंट देख लीजिए। दैट इज व्हाट वी ऑलवेज लुक फॉर, द कमिटमेंट एंड द डेडिकेशन ऑफ एनी प्लेयर। फॉरगेट द टैलेंट, द एक्सपीरियंस in a 45 plus format. What we look forward to is your commitment and dedication. The guys are still willing to learn. They are willing to pick up the tricks of the trade. They are willing to take their game from large to extra large. They are willing to turn round the corner. That's the best thing about this 7th edition of the GSC 45 plus T20 League, which is the signature event of the GSC. दिल के सबसे करीब ये वाला इवेंट। आक्रामक खेलते हैं मनीष, लेकिन शॉट सिलेक्शन मायने रखता है। अपनी विकेट पर दाम लगाना होगा, बड़े नॉक्स को अंजाम देना होगा। 2 अच्छे नॉक्स खेले हैं। Kalpesh is a terrific batter, terrific batsman. Kalpesh, if he comes good, he can be really a superstar batsman. If he can really play to his best, if he can present a vintage version of himself, is going to be a very difficult batsman to control. Oh, what a delivery. We keep talking about dedication, commitment, and the hard work. No better example than the man who's bowling at the moment. That's Karan Singh Walia. Of what I keep hearing is that he really puts in the long hours. He puts in the hard work, the hard yards, the results for everybody to see and applaud. A terrific batsman, Karan Singh Walia. Almost into the block hole. Oh, an ordinary piece of fielding that will result in a Rhythm Mobile's boundary. All of a sudden, in the post-drinks interval, the fielding has gone down. They've gone a little cold in the field. That's pretty surprising. We're talking about the frontline batters. How can we not talk about Srinath Pai, Munir Chandniwala, Prashant Desai, Karan Singh Walia, Alok Somani,
असलम भाई, आनंद संघाई, terrific frontline batters, terrific. Gautam Parekh, drifting down the leg side, wanting to catch the batsman on the wrong foot, in the bargain, straying down the leg side just a wee bit extra, and that results in one extra run added. Well bowled. How did it miss the stumps? What happened out there? That's going to be an interesting replay to watch. How could it miss the stumps? Just by a whisker. That's what you call putting the ball into that business area and giving it the due respect. Score after 14 PCPL overs, 125 for 2. Let's have a look at the projected score, 179. I do not think that they will settle for 179. They will ideally be wanting something in the region of 190 now. They will be greedy for a few extra runs, not just as a cushion for this match. Definitely they want a cushion out here, but more importantly, they want that net run rate to stay right up there, and maybe they want that net run rate to go higher up. So that's the thought process. Score after 14, 125, and being brought back into the attack, that's Anil. It's going to be bowling to Kalpesh Doshi. कल्पेश दोषी एक ऐसे बल्लेबाज है जो हर किस्म की बंदिश को तोड़कर बिल्कुल तूफानी पारी खेल सकते हैं. काफी काबिल प्लेयर है, सक्षम प्लेयर है. He's got a 360-degree range of shots. Let NK come off the field. The bottom hand coming into play. The second run easily collected. Some situations warrant thinking out of the box, and have a feeling that Karan Singh Wali at some stage in this innings will have to think out of the box. करीबन हर ओवर में अनिल जैन वो स्लोर गेंद की आजमाइश करते हुए नेट्स में काफी प्रैक्टिस की है, और इसी वजह से वो आत्मविश्वास उनके पास है. देखिए किस तरह से वो बॉटम हैंड के चलते कल्पेश ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को खींचा है वाइडिश मिड विकेट के एरिया में, और 2 रनों की बढ़ोतरी. कल्पेश दोषी ने आज की शाम एक बड़ी उड़ान भरते हुए अपनी टीम के लिए एक नया अफसाना लिखना होगा. थोड़ा सा जल्दी किया, इसी में चेंज ऑफ पेस गेंद की बात कर रहा था. अनिल जैन भी अभ्यास पूर्वक अपना क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत मशक्कत करते, एक गोल के साथ उतरते हैं ग्राउंड पर, चाहे फिर वो प्रैक्टिस हो, मैचेस हो, हमेशा अपनी गेम को इंप्रूव करने की तलाश में लगे होते हैं अनिल.
अनिल जैन अपने तीसरे ओवर में है, अभी तक 23 रन से दिए गेंद शेष है। विकेट्स नहीं मिली है, लेकिन बल्लेबाजों को बांधे रखने में सफलता उनके हाथ लगी है। मुनीर चांदनीवाला और प्रशांत देसाई ने अपनी सलामी बल्लेबाजी जोड़ी के करिश्मे के तहत वाकई में एक अलग रौनक डाली है जीएससी 45+ T20 लीग में। सभी को मंत्रमुग्ध किया है ये दोनों बल्लेबाजों ने, क्या कंसिस्टेंसी दर्शाई है। इससे बेहतर ओपनिंग पार्टनर, ओपनिंग जोड़ी किसी भी टीम के पास नहीं है। अगर होती भी है तो इस तरह का कारनामा नहीं दर्शाया है। पंद्रह ओवर करने में 64 मिनटों का समय लिया है, 11 मिनट कम लिए है। अभिनंदन के पात्र है टीम गैंगस्टर्स। देखिए, येट टू बैट धर्मेंद्र पारेख, विपुल पटेल, भाविन ठक्कर, विपुल गाला, दीपन पटेल, मनीष देसाई, दीपेश मेहता, श्रीनी रयावरप्पू। क्या बैटिंग लाइनअप है टीम सुपरस्टार्स की, बहुत ही तगड़ी। टीम सुपरस्टार्स के लिए सबसे अच्छी बात यह रही है कि जिस तरह का स्टार्ट दिया है टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने, वो मेन लीग प्लेयर नंबर 3 के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए पोस्ट पावर प्ले उतरने को मिला है और इस वजह से इतनी मजबूत स्थिति में, मजबूत जमीन पर है टीम सुपरस्टार। ना केवल इस मैच में बल्कि इस टूर्नामेंट में भी बहुत ही मजबूत जमीन पर। मनीष शर्मा भी अब जो 2 अच्छी इनिंग्स के लिए, उन 2 अच्छी इनिंग्स के बलबूते पर जो आत्मविश्वास जो उनके पक्ष में है, अब ही इज ग्रीडी फॉर मोर रन्स नाउ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सक्सेस। You want more and more. So make hay while the sun shines. मनीष ने केवल 5 गेंद खेली अब तक और 13 रन से जोड़ लिए हैं। कभी कभी वक्त की नजाकत को देखते हुए मैच में अपने रंग बदलने होते, अपने तेवर बदलने होते। और एक चौका रिदम मोबाइल से बाउंड्री मनीष शर्मा के पक्ष में। मैच को जीतने के लिए तरीके बदलने होंगे, इरादे नहीं। बिल्कुल बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना होगा टीम गैंगस्टर्स ने। They'll have to embrace all the positivity and banish all the negativity if there is at all. I think there is no pressure on team gangsters at all. They will play their natural game when they come out to express themselves as a batting unit. They will be all flamboyant. They will be all like a team gangsters. थोड़ी सी खबरदारी इस बात की लेनी होगी टीम सुपरस्टार्स ने। जो भी लक्ष्य वो डिफेंड करेगी कि आज की शाम बिल्कुल दबंगाई के साथ गैंगस्टर्स बल्लेबाजी करेगी। ये केवल एक खतरे की घंटी है टीम सुपरस्टार्स के लिए। और आखिर में क्रिकेट गेम अनिश्चितताओं का खेल है। रिलैक्स होने की तो कोई जगह है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता कि टीम सुपरस्टार्स रिलैक्स कर जाएगी। इस टूर्नामेंट में अगर आगे बढ़ना है तो अच्छे क्रिकेट के साथ दुआओं के काफिले को भी साथ ले चलना होगा करण सिंह वालिया ने। इस बीच और एक मिसफील्ड फलस्वरूप और एक रिदम मोबाइल्स चौका। ड्रिंक्स इंटरवल के पहले कितनी अच्छी फील्डिंग की थी। ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात अचानक से वो पासा पलटा है। They are starting to get a big stranglehold on the match. इस मैच को अपनी गिरफ्त में लेते हुए, अपने कब्जे में लेते हुए टीम सुपरस्टार्स
हालांकि काफी क्रिकेट खेलना शेष है, but at the moment there is no doubt that they are in the driver's seat in a very commanding position. They have a certain superintendence over Team Gangsters at the moment, but still some cricket left to play. आखिर में वो रन मिला. The ball ricocheting off the stumps at the non-striking end, and that one run easily taken in the form of a. Oh, that's been referred. So let's see. Let's have a look. Let us be a little patient. वापसी का रास्ता तलाशती हुई टीम गैंगस्टर्स. इस वक्त जो आक्रामक रवैया इख्तियार किया टीम सुपरस्टार्स ने, वो इस वक्त गैंगस्टर्स के मत्थे पर वो परेशानी की लकीर को निर्मित करती हुई टीम सुपरस्टार्स इस वक्त नॉट आउट, गुड टू गो. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, हल्की सी अपील ना कहा अंपायर प्रशांत दुबे सर ने. हमेशा से ही मनीष शर्मा अपना आक्रामक रंग पेश करते, आक्रामक खेलना उनकी फितरत है. One more couple collected. Of the 9 balls that is faced, Manish Sharma has accumulated 19. इस टूर्नामेंट के पहले मैच में 1 रन बनाकर आउट हुए थे मनीष. दूसरी इनिंग्स में 33 रन बनाए, तीसरी इनिंग्स में 28 रन बनाए और चौथी बार अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं. सो थैंक यू टू आकाश सिंह एंड यतीश फॉर थ्रोइंग दो स्टैटिस्टिक्स एट मी. फॉलो विकेट से पहला विकेट गिरा, रिटायर्ड आउट के रूप में प्रशांत देसाई वापस आए और दूसरा विकेट गिरवा 104 पर. दोनों बल्लेबाज रिटायर हुए. हालांकि 2 जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट से दर्ज हुए हैं. अनिल जैन की अजमाइश अब इन ऑर्बिट एंड की तरफ से होती हुई, छोर बदलते हुए अनिल के लिए, लेकिन भूमिका वही होगी. अच्छा इनसाइड आउट शॉट, सट्टी के टाइमिंग, कोई भागने की आवश्यकता नहीं है. वो चौका लिखा हुआ था बोल लेडर्स में, रिदम मोबाइल्स चौका कल्पेश दोषी के नाम. 147 रन से 2 विकेट के नुकसान पर. हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी तरह से गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. हल्का सा दिशा से भटके, रूम दिया और फलस्वरूप भरपाई करनी पड़ी चौके के साथ. आउटसाइड है, 4 रन से मिलेंगे. चलिए और एक रिदम मोबाइल से चौका. हालांकि इंटेंशनल नहीं था, लेकिन स्वागत आ रही है चौका टीम सुपरस्टार्स के लिए. वेलकम रन से, नेवर माइंड हाउ दे कम टिल द टाइम दे कीप कमिंग. A little expensive in this over, Anil Jain.
The first 16 balls in his spell were spot on, and the last 8 balls are proving to be quite costly. The figures getting spoiled for Anil. 151. Clean ball. He gets his man off the thickish inside edge. Looking to play a shot that really wasn't there. The head was in the air, and that is why there was no balance. संयम का बांध टूटा, फलस्वरूप पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल डिफेंडर विकेट. बड़ी मछली जाल में फंसी है. The big fish in the net. This could be a difference of at least 10 to 12 runs. पराग मोरे का अब आगमन होता हुआ. अच्छे फॉर्म में है. एक हाफ सेंचुरी दर्ज की है इसके पहले के मैच में या उसके पहले के मैच में. अच्छे फॉर्म में है. एक आधार स्तंभ प्लेयर है टीम सुपरस्टार्स का. कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और लानी होगी अपनी गेम में, तब जाके बिल्कुल एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में अपने लिए ख्याति बना पाएंगे. मजबूत स्थिति में है टीम सुपरस्टार्स. उस लहराती गेंद को सहलाया है वाइडिश मिड ऑफ के क्षेत्र में. 1 रन से समाधान प्राप्त किया, वो दूसरे रन लेने से मना कर दिया. 17वें पीसीपीएल ओवर की एक गेंद बाकी है. सत्रह ओवर्स के बाद 153 रन बने हैं. अपने स्पेल में 34 रन से दी एक विकेट को हासिल करते हुए अनिल जैन ने. Maybe around 28, 29 he would have been more than happy. Maybe 6-8 runs extra is considered. Being brought back into the attack, that's Sushil from the in-orbit end. Warm greetings to Ravi Narayan Sahu. राजेंद्र गौतम सर का स्वागत है. दिगंत गौतम का भी. All that I can mention about Manish Sharma is that he's looking greedy for more runs, and that should be the case. You've got only 36 balls with you every innings to show to the world what you're made up of, to showcase your batting ability. You've got 36 deliveries every match. टाइमिंग ठीक ठाक नहीं थी. बाल बाल बचे सुशील गौतम. केवल एक ही रन मिला उस लूज गेंद के लिए. और पराग मोरे जब गेंदों को टाइम करते, वो गेंद लंबी ट्रैवल करती है, मिस कर गए. बाल बाल बचे. बहुत ही आगे थी वो गेंद सुशील से. विनोद दोकानिया ने दौड़ लगाई थी इंद्रजीत ने, और
सुशील ने बिल्कुल वो ट्रायंगल में वो बीच में गेंद गिरी. The darkest nights produce the brightest stars. That's the belief that gangsters will have to hold on to it. Hold on to. Gopal Bhai is enjoying the fielding for Team Gangsters. Both Prashant Desai and Munir Chandiwala have looked like billion-dollar players in this tournament. Smoking hot, both the batters. More often than not, they've succeeded in providing a fantastic start to the team. A lot of credit the way of all of 45 plus players, because longevity comes with a lot of hard work, discipline, commitment and adaptability. Score after 18 PCPL overs 160. They will be looking for 22 plus. Something in the region of 24-25 is what they want to be putting up on the board in the final 12 balls. The penultimate over to be bowled by Karan Paji. Courtesy the consistent opening partnerships that team superstars have got in this tournament, it's looked like rainbows and sunshine for team superstars most of the way. Hunting for that crucial breakthrough. Everybody applauding Gopal Bhai. And maybe Gopal Bhai's stint in the field was one of the best he's had in this tournament. Look at Kuldeep sir. Welcome to Bhavtisha Dipesh Mehta, a champion throw ball player. One more couple added. Welcome runs. Manish on to 25 for 15. For the third time on the trot, is among some good runs, useful runs.
Deft touch, deft touch. The man with a fresh pair of legs is inside, but he cannot stop that with the mobile's boundary. He's just arrived at the wicket, and the very first ball is that to give it a chase. With that with the mobile's boundary, the score on to 166. The current run rate 8.97. दो 2024 का सीजन मिस किया था मनीष शर्मा ने। गए 7वां संस्करण 45 प्लस इवेंट का मिस किया था, भरपाई करते हुए बड़ी शानदार तरीके से इस 2025 वाले सीजन में तीनों ही को ओनर्स अच्छा प्रदर्शन करते हुए, मुनीर चांदनीवाला, मनीष देसाई और मनीष शर्मा, जब पूरी जो ओनरशिप की टीम है वो जब अच्छा परफॉर्म करती है तो वो मेरे ख्याल में वो टीम के लिए बिल्कुल हनीमून पीरियड होता है। दे आर लाइक ऑन अ क्रूज। मनीष शर्मा ने इतने तो 2 रन्स दौड़े हैं कि वो कह सकता है कि मैं काफी फिट बंदा हूं। उतने तो आज दूसरे सेकंड रन्स लिए ही है। 19 ओवर्स के बाद 169 रन्स बने। 3 जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट के नुकसान पर। द फाइनल 6 बॉल्स। Mane bowling the last over. He bowled the first over and will be bowling the last over. Manish on strike. 169 it is. A 19 ball 32 his name. Oh, that is a good shot. Just look at the way he nudges that ball around the corner. Very smart with the mobile's boundary. This is unbelievable stuff from Manish Sharma. He goes on to 36. So he goes past his highest score in this tournament. He goes past 33, 33, 28, and tonight 36 not out. He's just had one blip. और पहले मैच में 1 रन पर आउट हुए थे, उसके बाद मन बना के उतरे हैं मनीष शर्मा के मैं योगदान करूंगा अपनी टीम के लिए। रनों का सैलाब बहता हुआ टीम सुपरस्टार्स के बल्लेबाजों से, विशेष रूप में मनीष शर्मा का बल्ला आग उगलता हुआ। गेंद की लंबाई को खींचा, इतने सेट हो के करीबन हर गेंद के लिए जवाबी कार्रवाई के रूप में एक आक्रामक शॉट उनके पास नजर आता हुआ। मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एटलीस्ट 8 से 9 बार वो दूसरा रन लिया है मनीष शर्मा ने। अच्छा स्टेमिना भी है, वो अपनी टैंक में अच्छा फ्यूल रखते हैं। इज नॉट लॉस्ट आउट ऑफ स्टीम।
3 किधर दोस्तों, रिदम मोबाइल से चौके की प्राप्ति होगी। चलिए, मनीष शर्मा के पास काफी गेंदे, टीम के पास 3 गेंदे। मनीष जा पहुंचे 42 रनों पर। क्या वो हाफ सेंचुरी के बारे में सोच रहे हैं? सोचना ही चाहिए, न सोचे तो फिर गलत होगा। 3 गेंद बाकी है, 42 पर है मनीष। चीरती हुई गेंद निकली, रिदम मोबाइल से बाउंड्री फेंस में जा क्रैश हुई। 46 रनों पर जा पहुंचे मनीष। वो गेंद आगे की तरफ परोसी, बल्ला घूमा और एक रिदम मोबाइल से चौका मिला। पराग मोरे शायद कहते हुए कि स्ट्राइक आप भी के पास रखिए, मैं उस एंड पे रन आउट होता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्ट्राइक आपके पास रखिए। ये होता है ना कि एक दूसरे की सफलताओं में टीम मेंबर्स खुश होते हैं। एंजॉइंग ईच अदर सक्सेस, दैट शुड बी द मंत्रा। $19.4, 183. Manish is on to 46. If he gets to his half century, the party will be a big one tonight. This might be his first century at the 45 plus cricket, half century at the 45 plus cricket. ना कहते हो तो फिर गलत होता, क्योंकि कहते कि टीम के लिए खेलना है, तो उस रन की कोशिश की। Parag More, will he be able to end the innings with a flourish? 184, ladies and gentlemen, boys and girls. Wide one under pressure, Mane. 185. शॉट अच्छा है, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक छोटा सा फंबल और दूसरा रन मिला। So yes, 187 is what team superstars put on the board in their allotted 120 balls after being invited to bat first. That's a handsome score on the board. Team Gangsters will require 188 runs to win the match of 120 balls when they come out in that quest of the run chase. Definitely a daunting ask, but not an impossible one, especially when Team Gangsters will be playing without any kind of a pressure. It's time for the mid-innings breaks. Over to Pramod Kashyap.
Veda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome back. 188 to win. The opening batting pair of Avinash Mahinkar and Ashish Goel. We've been mentioning the opening pair of Prashant Desai and Munir. That's a lethal combo. But this batting pair is also not too far behind, Ashish and Avinash. They have to be at their very best. They got to present their best two versions tonight. एक 3-4 चाबियों का गुलदस्ता यहाँ पर मिला है. So please, it's a keychain and 3-4 keys. Kindly check your pockets, your purses. Lost and found keys with me. Thank you. Prashant also opening the bowling proceedings. Play time. Just a look at the bounce. That was courtesy the ball landing on the seam. Good seam presentation and nicely negated the odd bounce. Oh, that wasn't too far away, but that was well struck. That is Ashish Goel. Up and away with that rhythm of its boundaries. A slightly back of length delivery, but this man has got a very good range of shots. And he's got the license in his pocket to go for the kill. Till the last season, we always used to see Manish Desai bowling that first over, but this season he opts to bowl from the other end, the second over of the innings. Prashant Desai, what a value addition to the team. Such a great asset. Good all-round skills. इस टूर्नामेंट को अपने नाम करते हुए प्रशांत. ओ मौका टपक गया. कैच छूटा, सपना टूटा, दिल रूठा. पारुल बेन टेंशन में. Parul Ben is the biggest cheerleader. It's a gang of 6 ladies out there. They've come out to cheer the team. Well bowled. That's a peach of a delivery. Exactly the corridor where you want the ball to be landing. It's going to be a test of character for Ashish Goel. There is no doubt about it. But Ashish is the kind of player who's got nothing to prove to anybody. Falling well short of cricket ki Pathshala. Well short of Dipan. Dipan is such a lucky man to have this kind of arsenal in his armory. Great ammunition in his team. It's all about setting it on fire at the right time. Team Superstars, definitely one of the very best teams in the tournament. Avinash on strike for the first time. Nicely leaning into that one. Avinash will never look to put in that extra effort to hit the ball hard. He relies more on timing. Avinash's whole batting is based on his timing. On the other hand, as far as Ashish is concerned, timing has to be there, but it's also about raw power.
Let's have a look at Avinash's current form. Started off with 49, then 17, then 7, 5 and a not. Score at the end of the first PCPL over, that's 6 for none. As was expected, the very miserly Manish Desai into the attack. One of the co-owners of the team and definitely one of the brand ambassadors of the game at the GSC Senior Cricket. Waited for the ball to arrive and putting it into the gap, and that's going to be such a crisp Rhythm Mobiles boundary. What a welcome for Manish Desai. Not afraid to play their shots, and that's just about the right kind of an approach when you're chasing 189. You got to make use of the power play, especially when the ball is new and hard and nicely coming out of the bat. That's the kind of duration wherein you want to collect as many as you can. The man in that short third man area, Baba. Backward of point, that's Prashant Desai. The orthodox point, that's Parag More. A good elevation. Deepen has been interested, but it goes over the pin for a rollicking comfort group 6. Man in that extra coverage, and that's Munir. Manish Sharma in that mid-off position, backward of square leg, that's Srini Rayavarappu. Dipen Patel in that long on position. The ball had enough steam on it to go over the head of Dipen. That was a lunging Dipen. He can hit the ball a long way, Ashish. 17 for none. We are into over number 2. One more iconic player has arrived. Sunil Devli. Putting the ball in the right spot, asking a question of Ashish, and happy to just offer the full face of the bat, just tapping it in front of his feet. Shot selection, that's going to be the key. Terrific range of shots that this man possesses. Slightly back of length. The timing a little haywire. Welcome to Hemant Moite, one of our key organizing committee members. That's Amit Mehrotra. Warmest greetings to him. Superstars, indeed, a team full of superstars. Eminent galaxy of superstars in the team.
Oh, almost got that man into the right position. The trap was laid, almost he taking the bait. He's fortunate to be still at the wicket, Avinash Mainkar. Score after 2 PCPL overs, 19 runs for the loss of no wickets. Slowly and steadily, we are making rapid strides into the business end of this tournament. And when I mention the business end, that's the last round robin league match for the top 4 teams. That is where the business end starts. Not just the qualifier number 1, the eliminator, and the qualifier number 2, but the last league match for the top 4 teams. That too is the business end. A little quicker to the air, also a flatter trajectory. Definitely the buy of Prashant Desai at the auction, that really has turned out to be the master stroke. What a value addition he's been to the team, Prashant. Very compact in defense, the perfect delivery. No ways that any batsman in the world could have played an aggressive shot to it. The picture perfect delivery and equally well played by Mainkar. He's got a very compact defense, a sound technique, and more than anything else, the match temperament for Avinash is amazing. And that is where he excels. Achhi timing. बाईस रन्स बने बिना कोई नुकसान के। इस इनिंग्स का ये तीसरा पीसीपीएल ओवर अपने प्रगति पथ पर है, 2 गेंद आनी शेष है। आशीष और अविनाश एक अच्छी शुरुआत दिलाने की एक सच्ची कोशिश में लगे हुए हैं। What an intent this man is exhibiting. He was absolutely brilliant with the bat, and now in this kind of a situation wherein the batsmen are ready to play the shots, tying the noose around both the batters is Prashant Desai. That's immaculate bowling. Military line and length, a metronomic line and length. He's essaying a very good role. Strong-headed character.
What a good investment Prashant Desai has proved to be. That investment is giving them such good returns. A switch in ends for Manish. Oh, that's below average bowling from Manish. Manish is the kind of a bowler who is always raised the bar here at the 45 plus cricket. A little off color tonight. A little here and there. It's not his usual spot on. That Rhythm Mobile's boundary takes the score to 26. Welcome runs for Gangsters. The ball was wobbling. Dipen gets around it, but before that, they get the second run quite comfortably. Welcome to Gajanan Jalgaonkar. Oh, that was straight into his face. Hopeful. Oh, the physio needs to get to the ground. Hope there's nothing wrong with him. Fortunately, he got the hands to the ball. Otherwise, that would have been a big blow. Everybody's concerned, and yes, everybody get to the ground. The reflexes are still spot on for Manish, otherwise it would have been a big danger. Do not want to see blood on the field, and hopefully Manish Desai will be okay. It seems like he's getting some prompt attention, and that is the order of the day. Just have a look at the screen. That could have been dangerous. Oh my God, that has struck him. That has struck him. Definitely he'll have a swelling, but he will prefer to kind of bowl his spell. If I know Manish what he's made up of, he will bowl his spell and then come back. It kind of brushed and went away, that delivery. That did not strike him cleanly. Anyways, let's get back to the cricket. It should be okay. $30 for none.
One bounce to Dipan. 31 it is. 2 balls left in this over from Manish Desai, one of the co-owners of the team, along with Manish Sharma, Munir Chandniwala and Dr. Vipul Patel. Happy to just tap and run. One final ball left in the 4th PCPL over. 32 it is for no loss. Even team Superstars were 32 for the loss of no wickets after 4. And that's a good looking shot. Just a look at how he turned the ball around the corner. Looking for the second run, and they will get the second run comfortably. 34 runs is what they've collected at the end of 4 overs without having lost a single wicket. Welcome to the players of Panther Kings, Jitu Mando, Tribals Kumar. Manish is coming back. A very spirited man. Some smiles in the camp of team Superstar, so nothing to worry. Change in a game plan for team Superstars. In all the matches we've seen Munir bowling with the new ball, but tonight is coming to bowl with the semi-new ball and is coming first change. Avinash Mainkar has put on 21 runs of his 13 balls, so it's a good start. He's playing at a faster clip than Goel. Goel is on to 14 of 12. Three back-to-back half centuries to Ashish Goel, isn't it, Yatish? Well bowled, keeping the ball away from the range of Ashish, as if
knowing that what kind of a shot is he was going to be executing, keeping it away from the range of Ashish. Well bowled. Missed timing, and that is what saves the day for him. Required 100, 9.68. Quite a few delectable shots we've had the privilege of witnessing as far as Avinash Mahinkar is concerned. This innings so far from Avinash has been punctuated with quite a few shots worth watching. 39 for none. Ashish on strike facing Munir. Manish Sharma is enjoying his cricket this season, missed out the last season. This is proving to be quite a fruitful season for him. More than anything else, he's enjoying the game. Welcome to Yogesh Sharma. Avinash always has got that extra fraction of a second to get into a position and play that shot late. That's a hallmark of a champion player. End of 5 overs. That's 41 for none. Required 100, 9.80. 90 balls and 147 required. A daunting ask, but not an impossible one. Especially looking at the fact that they've got all the wickets intact. Bit of a late arrival, but Manu Gautam has come in. Prashant, the start of over number 3 for him. That's a leg by. Having a conversation with the bowler, almost forgot to indicate that to give the signal for the leg by. That's a well struck stand and deliver. Ashish is ready to take things easy because Avinash is going great guns. What terrific form this man is in. Ashish Goel, 3 back-to-back half centuries to his name. That's incredible. That's a wide one. So one extra run takes the score to 44. 4 balls left in the PCPL power play. Over number 6. 4 balls left from Prashant. Prashant is into his 3rd over.
He's given away 11 so far without having picked up a wicket. Avinash is somebody who does not have such a prominent backlift. Not as low as Nigam Patel and Sushil Patil, but yes, his does not have that prominent backlift. Oh, that's a well struck, played with such a good intent, and that's a desired result. He gets it with the mobile's boundary. आगे की तरफ गेंद को परोसा था और जड़ दिया rhythm mobiles चौका. You cannot trespass into the territory of the batsman. You do so, you're going to be prosecuted. The penalty that you got to pay is a rhythm mobiles boundary or a comfort group 6. So on that occasion, that's a rhythm mobiles boundary. 49. सभी विकेट्स महफूज है. 49 रन्स बने हैं. हाफ वॉली को रिदम मोबाइल्स बाउंड्री के लिए जड़ दिया. गेंद की लंबाई को थोड़ा सा खींचा, उसके बावजूद अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए सामने की तरफ एक थप्पड़ मारा. स्लैप शॉट. 50 रन बन चुके हैं टीम गैंगस्टर्स के लिए बिना कोई नुकसान के. ये अच्छी बात है. लगे हुए हैं, डटे हुए हैं. ललित डागलिया का भी स्वागत है. वेलकम टू ललित. Well played. Well played. Such a correct player. He goes by the book Avinash, but sometimes in a T20 game, he's ready to experiment as well. He's ready to think out of the box. He's not that absolute rigid mindset kind of a player. He's a little flexible with his options. And that is why the ideal man to be going out to open the batting for your team.
No chances at all. That is such a crisp rhythm mobiles boundary. What a way to welcome Baba. That was the loosener. Never mind, even if the bowler is as good as Baba, you got to be spot on. Even for the good players, there is no room for error. A welcome rhythm mobiles boundary being added quite early on in this over. In fact, the very first delivery of the over from Baba. Just look at the way he's connecting the ball. Very good timing in his shots. Almost everything that is thrown at him is meeting with the meatiest part of the blade. That is where the timing is coming from. The ball and the bat connecting perfectly. बाबा के पास बिल्कुल चट्टान जैसा अनुभव है और इस तरह की स्थिति में से कई मर्तबा गुजर चुके अपने लंबे करियर में। भली भांति जानते हैं कि किस तरह की अपेक्षाएं है टीम सुपरस्टार्स को उनकी तरफ से। अविनाश मयंकर को रोकना मुश्किल होगा। चारों ही तरफ अपने दर्जेदार रनों की रंगोली को सजाते हुए अविनाश मयंकर काफी अच्छे नजर आए हैं। अभी तक अविनाश मयंकर ने 21 गेंदों का सामना किया है। 15 गेंद अभी भी शेष है उनके पास। जो भी कुछ डैमेज करना है टीम सुपरस्टार्स के प्रोस्पेक्ट्स को, केवल अब उतनी ही गेंद बाकी है। सातवें पीसीपीएल ओवर की एक गेंद शेष है। Well bowled. That was well bowled, intelligently bowled. Such a smart delivery. Score after 7 PCPL overs. That's 61 for none. The required run rate is 9.77. 78 balls, 127 to win the match. Who will Dipan Patel fall back upon? Looks like it's going to be Dipan Patel himself. Because that was obvious because Baba was taking his position and obviously now Dipan had to bowl. क्रिकेट की पाठशाला दीपन पटेल की अजमाइश होती हुई यह अच्छा मुकाबला होगा दीपन पटेल बनाम आशीष गोयल। इन ऑर्बिटेंट की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार दीपन पटेल अपनी ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी के साथ। टीम के कप्तान क्या सिकंदर प्लेयर है दीपन पटेल।
दीपन पटेल को अभी तक अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा है इस पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि एक मैच हारे, लेकिन ज्यादा टेस्ट नहीं हुई है टीम सुपरस्टार्स। आगमन होता हुआ चांदप्रीत सिंह वालिया का, टीम गैंगस्टर्स के को ओनर। लंबे अरसे के बाद चांदप्रीत सिंह वालिया का आगमन हुआ है। आगमन ब्रदर्स, वालिया ब्रदर्स, कैस्टेलिनो, दीपक शेट्टी, कौशिक मेहता, ये ओनरशिप कैंप है टीम गैंगस्टर्स की। बहुत ही ज्यादा दूर थी। तिरसठ बिना कोई नुकसान के। देखना है कि कौन सी टीम अब यहां से लेकर बिलीवर से अचीवर बनती है। बराबरी का मौसम बना हुआ है इस मैच में। वापसी के दरवाजे खोलती हुई टीम गैंगस्टर्स। बहुत ही आला शुरुआत है, जिस तरह से प्रशांत और मुनीर ने अपनी टीम को एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाई थी, उसी लिहाज से दोनों ही ओपनर्स आशीष और अविनाश अपनी टीम के लिए करिश्मा कर गुजरते हुए। थोड़ा सा ओवर रीच किया अविनाश ने और इस वजह से आखिरी वक्त पर केवल गेंद को सहला सके संजीव महाजन। 8वां ओवर प्रगति पथ पर 2 गेंदानी बाकी है। अच्छा इंटेंट, 4 रन्स मिलेंगे। गेंद चीरती हुई निकली और एक रिदम मोबाइल्स की प्राप्ति होती हुई अविनाश मयंकर को। अविनाश मयंकर ने अभी तक केवल 25 गेंदों का या 25 गेंदों में 40 रन बनाए अपने आप के लिए और टीम जा पहुंची है 70 रनों पर 8 पीसीपीएल ओवर्स की समाप्ति के बाद। रिक्वायर्ड रन रेट 9.83। सभी विकेट्स बिल्कुल सुरक्षित है। अभी तक अपने किले में सुरंग नहीं लगने दिया है टीम गैंगस्टर्स ने। सभी विकेट्स महफूज है। क्रिकेटिंग गलियारों में काफी चर्चे होती है आशीष गोयल के फॉर्म की। लगातार 3 मैचेस में 3 अर्धशतक उनके नाम दर्ज है। जबरदस्त शॉट, कंफर्ट ग्रुप 6। आशीष गोयल के बल्ले से निकला वो तेज तर्रार कंफर्ट ग्रुप छक्का। धर्मेंद्र पारिक की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है। धर्मेंद्र पारिक की पहली ओवर की पहली गेंद पर चौका मिला था, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अब कंफर्ट ग्रुप छक्का। और एक चौका। चलिए, अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए अब आशीष गोयल, उनके मंसूबे कुछ ठीक नजर नहीं आते हुए जहां तक टीम सुपरस्टार्स का सवाल है। अच्छी शुरुआत टीम गैंगस्टर्स के लिए। दोनों ही
चोर की तरफ से अब बड़े रन्स आते हुए, शानदार रनों की प्राप्ति होती हुई, रन संख्या 80 पे बिना कोई नुकसान के 85 रन बिना कोई नुकसान बनाए थे टीम सुपरस्टार्स ने जब वो पहला विकेट रिटायर्ड आउट के रूप में गिरा था। 85 की पार्टनरशिप, यहां पर 80 की पार्टनरशिप हो चुकी है। मैच बराबरी के माहौल में चलता हुआ, बराबरी का मौसम। The match is in a state of equilibrium. Even Stevens at this point in time could be anybody's match at this stage. Both the teams are playing such a disciplined cricket. They're dishing out such exciting cricket. Good to watch. This is the top draw cricket. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि टीम गैंगस्टर्स के लिए आशीष गोयल वो अर्जुन तीर है जिससे किसी भी दुश्मन को धाराशायी किया जा सकता है। रुक करते दोनों की गेंदों की तरफ, दोनों ही बल्लेबाजों ने 26-26 गेंदों का सामना किया है। दोनों ही के पास 10 गेंद शेष है अपने कोटा में। बाबा थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, हालांकि वो 4 ओवर्स का स्पेल मुकम्मल करना होगा। बड़ी शिद्दत से टीम गैंगस्टर्स आगे बढ़ती हुई। नाम है गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स जैसा ही एक आक्रामक रंग दर्शाते हुए। फ्लाइटेड गेंद, फ्लाइट में बीट किया, अच्छी गेंद थी। ये मजबूत पक्ष है धर्मेंद्र पारिक का। धर्मेंद्र पारिक की इस गेंदबाजी में से अगर वो फ्लाइटेड गेंदे आप निकाल दो तो फिर वो बहुत ही कम इफेक्टिव साबित होंगे। वो बाजी मार लेते जब वो गेंद को फ्लाइट कराते हैं, हवा में बल्लेबाज को मात कर जाते हैं। ओवर की समाप्ति 9 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 84 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। बहुत ही आला शुरुआत, शानदार शुरुआत। यह मैच किसी के भी पलड़े में जा गिर सकता है। इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। सभी विकेट्स बिल्कुल महफूज है। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने अपना कारनामा कर दिखाया है। जो आने वाले 3-4 की प्लेयर्स है उन्होंने भी इसी तरह से इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करना होगा। पूरी तरह से ये मैच, जहां तक टीम गैंगस्टर्स का सवाल है, पहले 5 बल्लेबाजों के इर्द गिर्द ये गेम का नतीजा नजर आएगा। उजागर होकर अच्छा क्रिकेट खेला है गैंगस्टर्स ने, अपने काबिलियत में विश्वास जताया है। दे हैव हेल्ड ऑन टू दैट एलिमेंट ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड व्हाट अ नाइट दिस इज टर्निंग आउट टू बी अविनाश मयंकर एंड आशीष गोयल कैरिंग ऑन विद द गुड फॉर्म। Dipan Patel. With a minimum of back lift, he can pack a punch, Avinash. Rhythm mobile's boundary. Bit of a misfield. Baba. $89, 5 balls left before the drinks interval. गोपाल भाई को दोनों ही टीम्स ने काफी भगाया है।
Good elevation. We'll have to wait and watch. That could be close and a drop catch. You got to take your chances. The ball seems to be following Dharmen Parikh. When it's not your day in the field, the ball will invariably follow you. In a T20 game, you cannot hide a fielder anymore. That's the modern day cricket. Those days are gone away. सितारे गर्दिश में हो तो हर दाव उल्टा पड़ता है. अचानक से वो फील्डिंग का स्तर गिरता हुआ. Tension in the air, tension in the air. There is no doubt about it. We are headed for an absolutely thrilling finish. What a match this is proving out to be, and it's great to see that Team Gangsters is ready to take the fight to the enemy camp. In fact, they will back themselves to go the distance from this kind of a situation. Welcome runs. That was the quicker one. Almost kind of anticipating something from the batsman, but not going as per his plan that occasion. 94. Oh, the flighted delivery this time. We'll have to wait and watch. Parag More has made a dash for it, but he cannot get around it. That is the half century for Avinash Mayankar. What a champion player is turning out to be. What a night he's chosen to showcase his batting skills. A multi-dimensional player. That kind of an effort is giving a big ray of hope to Team Gangsters. The match on, the game on. Do not go away. So this becomes the second highest partnership, is it? Oh yes. Second highest partnership. We witnessed only 100 plus partnership that came off the blades of Vijay Singh and Saked Adhikari. Team challengers. The only unbeaten team in the tournament. 102 partnership. Now they've got a chance to go one up. Forget that chance. They are looking to win the match now. They're not worried about individual laurels. They're not worried about individual glory. Such. Oh, missing ahead. We'll have to wait and watch. This could have been an absolute tragedy. Gopal Bhai is running for his life. अफरा तफरी मची हुई वहां पर. सब कुछ देखने को मिलता हुआ. अगर इस मैच को आपने नहीं देखा तो फिर जीएससी क्रिकेट क्या देखा फिर आपने. 100 रन बन चुके इसके पहले कि वो 10 ओवर समाप्त हो. क्या बात है, क्या बात है. सभी को मंत्र मुग्ध किया ये दोनों ही बल्लेबाजों ने. क्या शानदार तरीके से इस इनिंग्स को आगे बढ़ाया है, सजाया है. पहले तो सवार, अब सजाते हुए इस इनिंग्स को. क्या बात है. सही दिशा में मार्ग प्रशस्त कराते हुए. चलिए ड्रिंक्स इंटरवल. आशीष ने 27 गेंदों में 28 गेंदों में 38 बनाए हैं. अविनाश मयंकर ने 32 में 53 बनाए हैं. 10 ओवर्स के बाद टीम गैंगस्टर्स ने 101 बनाया है. अब आलम यह है कि 60 गेंदों में 87 रन बनाने हैं, जबकि सभी विकेट्स महफूज है. 51 मिनट से लिए थे, 41 मिनट से लिए थे गैंगस्टर्स ने. 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए और उतने एक्स्ट्रा रन्स भी दिए टीम सुपरस्टार्स ने. द मैच ऑन एंड द गेम ऑन. स्वागत है एक फाइटिंग क्रिकेटर, टेनिशियस बैट्समैन निगम पटेल का.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो. वेलकम बैक. बिल्कुल रोमांचक मोड पर यह मैच हाथ थमा हुआ है. ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात मुनीर ने गेंदबाजी का भार संभाला हुआ है. स्ट्राइक पर अविनाश है जिन्होंने 32 गेंदों में शानदार 53 रन्स बनाए हैं. 4 गेंद शेष है. देखना है कि किस तरह की अब स्ट्रेटजी बनाई है टीम गैंगस्टर्स के थिंक टैंक ने. क्या रवैया होगा? बस जो जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसी तरह से आगे बढ़ते रहे. ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा उनके रवैये में. थोड़ा सा दिशा से भटके. एक ही मैच में दोनों ही टीम्स की तरफ से शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिलना है हम सभी का सौभाग्य है. मुनीर की अच्छी गेंद. और एक वाइड गेंद. थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी. थोड़ा सा उछाल से गिरफ्तार करना चाहता बल्लेबाजों को. चलिए गैंगस्टर्स की तरफ से ये वाली ओपनिंग पार्टनरशिप नंबर 1 पर है इस टूर्नामेंट में. नंबर 1 वाली पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप. और एक वाइड गेंद. थोड़ी सी एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलती हुई. शायद थोड़ा सा क्रॉस सीम पकड़ना होगा गेंद को. Dipesh Mehta does the backup job. A cover drive that would everyone made somebody like Virat Kohli proud of it. 106. Last 2 balls. One. The final 2 balls. Well bowled, well bowled. That is what you call strangulating the batsman. Three balls left in over number 11. The current run rate is 10.19. The required run rate is 8.53. Just look at how the dynamic of the match has turned on its head.
Incredible batting. और एक बड़े टारगेट को चेस करने के वक्त इस तरह की साझेदारी यानी सोने पे सुहागा, क्या रन चेस को प्लान कर रहे हैं? आखिरी गेंद है, चलिए 56 रन बनाए अविनाश ने। 60 बनाते या 60 के ऊपर भी बनाते तो रिटायर होना आगा, वैसे भी और वैसे भी। सत्तावन रनों की नाबाद पारी खेलकर पेविलियन में वापस आते हुए क्या इनिंग्स खेली अविनाश मयंकर ने, याद दिलाते हुए कि मैं आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। लुक एट हिज वैगन व्हील। मेरे उतरते पानी को देख किनारे पे घर मत बसाना, मैं समंदर हूं, वापस लौट के आऊंगा। बस यही स्टेटमेंट दिया अविनाश ने। डू नॉट फॉरगेट मी, आई एम स्टिल हैंगिंग अराउंड। What a knock, what a good knock under pressure, especially when you're chasing a mountain. This kind of a clinical run chase that they have given birth to, that's incredible. In comes Karan Singh Walia. He's turned a new leaf at this age in the last 2 years, Karan Singh Walia. Amazing. Extraordinary approach and attitude from Karan Singh Walia. What will he do tonight? Well bowled, very well bowled, putting the ball right up there into the block hole, almost nailing the Yorker. 30 balls is what Ashish has faced. Generally तो आशीष 30 गेंद खेल लेता है तो वो 55-60 बनते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा नियंत्रण में रखा है। यानी इस वजह से मैं कह रहा हूं कि खराब गेंदबाजी नहीं की है टीम सुपरस्टार्स ने। फील्डिंग थोड़ी सी खराब की है, लेकिन गेंदबाजी सम्मानजनक की है। इट वाज सिंपली अ केस ऑफ वेरी गुड बैट्समैनशिप फ्रॉम आशीष एंड स्पेशली फ्रॉम अविनाश मयंकर। करण सिंह वालिया का फॉर्म देख लेते हैं। पहली मैच में 13 रन, फिर एक बीर, फिर 62 और फिर 52 और फिर 20। गत 3 इनिंग्स में काफी अच्छे फॉर्म में है। 62, 52 and 20. So he's amongst very good runs. One of the most improved players at the GSC across all age groups. All age groups. Very strong in the head. He will always back himself and never mind what the situation is. Prasad Karkera, there you go. Yes, Prasad Karkera, as the convener of this event, has burned the midnight oil along with Kaushik Bhai, Subbu Bhai, Amar Khan Jain, Shailesh Chadwa, Amol Polke. Oh, as I mentioned, so I had not seen Kaushik Bhai arriving, so welcome to Kaushik Bhai Mehta. Off the mark with a classic drive, driving it downtown. This kind of a match will lift the standard of the GSC 45 plus T20.
वो टाइम आउट का रूल नहीं है, वरना तो टाइम आउट बिल्कुल ले लेते टीम सुपरस्टार्स। हवाई यात्रा पर वो गेंद निकली है और दीपन पटेल की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त किया। 51 गेंदों में 75 रन बनाने हैं। 51 balls, 75 required to win this match. सक्सेस स्टोरीज वही प्लेयर्स क्रिएट कर पाएंगे, द प्लेयर्स हु ड्रीम बिग, द प्लेयर्स हु बिलीव इन देमसेल्व्स। ये दो चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, ये दोनों ही पहलुओं का होना जरूरी है। एक तो आपको बड़ा सपना देखना है और अपनी काबिलियत में विश्वास रखना है, तब जाके वो सफलता की कहानी आप लिख पाओगे। एंड दिस 45+ क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दो सक्सेस स्टोरीज। Ashwini Rayavarappu taking that catch under pressure. Ashish is on his way back. Bit of a relief. In any case, he had only 4 balls left, but that could be a difference of 8 to 10 runs. And that kind of a catch will lift the morale of a team superstars. Ashish going back to the pavilion, retired and taking a wicket. It's a different ball game. Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wicket. That's the big fish in the net. Well played Ashish and equally well played. That's Mane. A lot of running to do. क्योंकि आज थोड़े से कम चौके लगाए आशीष ने, तो थोड़ा सा और भागना पड़ा, लेकिन और एक बढ़िया नॉक। क्या कंसिस्टेंसी दिखाई है आशीष ने। आशीष जैसे स्ट्रोक प्लेयर के लिए इस तरह की कंसिस्टेंसी को दर्शाना ये बहुत ही बड़ी बात है। यानी किसी भी गेंद पर शॉट नहीं खेलते, पिक एंड चूज करते गेंदों को अपना शॉट्स खेलने के लिए। केवल ये बात है कि इतने अच्छे प्लेयर है कि कभी कभी वो अच्छी गेंद भी उनके लिए साधारण होती है। A good catch by Srini. Looking to claw their way back into the match. Looking to gain that momentum now. इंद्रजीत बच्चर 12 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रशांत देसाई के उस ओवर में सफलता उनके हाथ लगी है। वन ऑफ द शो स्टॉपर्स ऑफ द इवेंट, दैट्स प्रशांत देसाई, द एब्सोल्यूट रॉक स्टार प्लेयर. ही हैज बीन स्मोकिंग हॉट. प्रशांत देसाई has picked up a couple of MOM awards, and this man is equally good. Munir Chandniwala. .48 balls and 74 runs required. The two set batters are back in the pavilion and two relatively new batters at the wicket. So that's the good news. This is exactly the time for Team Superstars to open those floodgates.
यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं का स्वागत है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की क्रिकेट कमेटी की तरफ से। बस इसी तरह का स्नेह और प्यार बरसाते रहे। निकल पड़े दूसरे रन के लिए, एक थ्रो के लिए एक रन, उनकी सोच थी, मिल गया वो रन। मुनीर चांदीवाला ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते फील्ड पर। Playing that shot a little early, looking to fetch the ball from outside the off stump. It's all about your state of mind. And Munir ticks most of the boxes as far as the mental fitness is concerned, being mentally strong. In this season, he has pretty much ticked each and every box. He's left no box unticked. That's the kind of form that he's been in. And with the bat, Karan Singh Walia has been top-notch. Now, can a few other batters in the top order, or at least till the upper middle order, can they show some spunk? Can they show some fighting spirit? Karan Singh Walia will have to play his role, but a couple of other players will also have to do the job. Achhi gend. Almost catching Karan Singh Walia on the wrong foot. Required run rate 9.55. The current run rate 9.32. 44 balls and 72 win. बढ़िया शॉट, शानदार टाइमिंग और अच्छी फील्डिंग दीपन पटेल की। टाइमिंग बढ़िया थी और काफी सीधा खेला था अपने शॉट को। Not a bad over from Munir, exactly what they wanted. The score at the end of 13 PCPL overs, 120 for the loss of 2 Jensen LED lights, Ganda Royal Refinery wickets. 9.71 is the required run rate. They do not want that required run rate to go up to more than 11 plus ideally. In any case, the worst scenario, they do not want to be chasing more than 12 and over. काफी कुछ अब निर्भर है करण सिंह वालिया पर कि किस तरह से पेश आते हैं आज। काबिलियत को लेकर किसी के भी मन में कोई शंका होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस सवाल यही है कि आज की शाम क्या करिश्मा कर गुजरेंगे करण सिंह वालिया। He'll have to present his best version. Mentally is right up there. This is going to be a good battle to watch now. The TRPs for this match hitting out of the roof. Welcome to Sunil Raheja, the co-owner of Team Riders. Team Riders gave a good account of themselves in this tournament. Although they are not amongst the top 4 or 5 at the moment, but yes, they have given a very good account of themselves as a team.
Back into the scheme of things, the spirited Manish Desai. The first 2 overs were expensive from Manish, and he will be looking to make amends. There is no doubting his capability. There's no doubting his seniority. A very miserly kind of a bowler. And this should be a good battle. Karan versus Manish. Super timing. As straight as an arrow. That must have stung his fingers. Dr. J is okay. Dr. J from Viveda Clinic, our physiotherapist, has been of great assistance. Dr. J. Rhythm Mobile's boundary. Exquisite timing on that. That was traveling like a tracer bullet. दरकार थी उस चौके की, वो दरकार पूरी की. करण सिंह वालिया का बल्ला किस तरह से जवाबी कार्रवाई के रूप में पेश होता है टीम सुपरस्टार्स के गेंदबाजों पर, किस तरह से हावी होता है, इस पर पूरी तरह से इस मैच का नतीजा निर्भर है. काफी हद तक, पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक. Definitely two noises there. Gopal Bhai is having a good outing. It's great to see somebody as senior as Gopal Bhai putting in all the effort, leaving no stone unturned in making sure that it does not mess up things. Pressure situation, pressure. It's all about handling the pressure. 13.3 overs, 128. The required run rate, 9.23. Early days for Karan Singh Walia and Inderjit. KSW has faced 8 balls. 39 balls, 62 win. Dipesh at the edge of the circle, that was well timed. Inderjit has to believe in himself. He's got to be mentally ready to take on the battle, to take on the bowling. He's got to be exhibiting that self-belief. Karan Singh Wali obviously is the positivity vaccine for the team. Till the time is around, Team Gangsters will always be in with a chance. All about his mental strength, all about the mental aspect, nothing else, only about the mental fitness. Prashant Desai, not easy to go past him.
End of the over from Manish Desai. The 3 overs from Manish Desai have gone for 36 runs. 131 for 2 after 14. 36 balls, 57 required. Munir is into his third over. Beg your pardon, the fourth over. The final 5 balls to come in the spell of Munir. He's given away 22 runs so far without having picked up a wicket. Munir cool and composed. हवा यात्रा पर वो गेंद निकली है, 4 रन्स मिलेंगे। करारा रिदम मोबाइल से चौका, वो गेंद आगे परोसी थी, जवाबी कार्रवाई के रूप में गेंद के नीचे आए और गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा। रिदम मोबाइल्स चौके की प्राप्ति होती हुई। कहीं पर भी मत जाइएगा, बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। Tighten your seat belts as we are taking a flight into a very exciting segment of cricket. Required 109.18, 136, 34 गेंदों में 52 रन्स बनाने हैं। ये आलम है, 34 में 52। अच्छी वापसी की, अच्छी गेंद के साथ। ये मामला पेचीदा हो सकता है और जो बॉडी लैंग्वेज इंद्रजीत बच्चर ने दर्शाई है वो कुछ अच्छा संकेत नहीं देती हुई टीम गैंगस्टर्स के लिए। नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड इज व्हाट द वाइस मैन से। Never run to a misfield. थोड़ी सी गलती है इंद्रजीत बच्चर की, थोड़े से कैजुअल थे। वो रन कंप्लीट करना जरूरी है। यू कैन नॉट बी कैजुअल। अच्छा साथ निभा रहे थे करण सिंह वालिया का। दुर्भाग्यवश थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच के चलते वो रन आउट होकर वापस आए हैं। हालांकि वो डिसीजन स्क्रीन पर आया नहीं है। जैसे जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट। इस मैच में से ये सीख लेकर जाएंगे इंद्रजीत बच्चर के, जब कभी बल्लेबाजी करते हैं तो बेसिक्स को स्टिक करना जरूरी है। यू हैव टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स, यू गॉट टू स्टिक टू योर बेसिक्स। दैट्स अ सिली मिस्टेक, नॉट डन एट दिस लेवल।
चले कोई नहीं. It's not about what the champions win and accomplish. It's all about how the champions win and accomplish. It's all about how and not about what. Required run rate 9.27. Not a mountain to climb. Not at all. But testing times, because they are up against a team like the Superstars, champion outfit. And that's why it's going to be a hell of an ask. Karan Singh Walia holds the key. Karan Singh Walia is the OTP to crack the code of this match. The only OTP. विनोद डोकानिया पूरी तरह से अपने अनुभव के बलबूते पे साथ निभाना होगा करण सिंह वालिया का और अपनी गेम को खेलना होगा. लगातार आपस में बातचीत करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा होगा विनोद के लिए और करण सिंह वालिया के लिए. विनोद डोकानिया को आज well bowled by Munir. Munir is about to bowl the final ball in his spell. He's given away 28 without having picked up a wicket. Four overs 38 is what Munir has conceded. A little expensive by his standards. End of the spell from Munir. 15 ओवर्स के बाद 138 रन से 3 विकेट के नुकसान पर 82 minutes is what they've consumed, 7 minutes more than what was allotted to them. Spare a thought for Vipul Gala, such a big name, such a rock star player. Vipul Gala, nobody can be more committed than Vipul. So safe with the gloves behind the stumps. And what an integral part of the think tank. He's such a great helper to Dipan. Dipesh Mehta is being brought into the attack. दीपेश मेहता की अजमाइश होती हुई थोड़े से टेंशन में भवतीशा मैडम नहीं बहुत ही नाजुक मोड़ पर गेंदबाजी में उतारा है. इतना आसान नहीं होगा दीपेश के लिए. He's got a job to do. He's been assigned a role and he has to be performing that role. The producer and director in this match for Team Superstars is Dipan, and he's assigned a role to this man, Dipesh, and he's got to live up to the expectations. 30 balls, 50 to win. Dipesh Mehta might not exactly be the superstar in the camp of Team Superstars, but make no two bones about the fact that he is a total team man. Off the field, he makes sure that there is a very cheerful atmosphere in the camp. On the ground, he is willing to put in more than 100%. So that is what he brings to the table.
It's a different ball game as it comes into bowl in this kind of a match situation. Everybody was lost. Gopal Bhai was looking behind. The ball went the other way. Tension in the air. स्वागत हार्य रिदम मोबाइल्स चौका खराब गेंद सही अंजाम तक पहुंचाया. थोड़ा सा गैम्बल लिया था दीपन पटेल ने दीपेश को गेंदबाजी देकर. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे मजबूर हुए थे क्योंकि वो कम से कम उतने गेंदबाजों को इस्तेमाल करना अनिवार्य है. The match is in the balance. Could go either ways. जब तक करण सिंह वाली और विनोद डोकानिया विकेट पे डटे हुए खतरे की घंटी मंडराती रहेगी. .78 the required run rate. 27 balls, 44 to win. That was Manish Sharma there. He makes a valiant effort, but that was in his range, and he puts the ball out of the ground for a comfort group 6. 150 up on the board. The required run rate now coming down to less than 9. That's the good news for Team Gangsters. 26 में 38 बनाने हैं दोस्तों. अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई सुपरस्टार्स. क़यामत की शाम है सुपरस्टार्स के लिए. बड़ी जद्दोजहद करती हुई टीम सुपरस्टार्स और गैंगस्टर्स भी. Oh my word. Oh, that has hit him. Oh. Is it an Amavasya today? What's happening? That has gone straight into him. Oh my God. Yes, not everybody can gather around the play. Let him get some air. Thank you. Everybody is concerned. That is absolutely natural. That was struck so fiercely.
If he's struck into that body part wherein there is some fat, should not be too much of a problem. But if it's gone straight into the bone, oh, is it asking for an ambulance? Is it so? Can we dial the right number now immediately? Somebody has to give that SOS call. That was the last thing that we wanted to watch. Nothing is going on YouTube. We hope all is well. Let me give you the update. He's okay, nothing to worry, just taking a break, resting. He's fine. That's a good news. We have scraped through a couple of incidents which could have resulted in being mishaps. Fortunate that there's nothing seriously wrong with anybody. That's a good news. Touch wood. वो इसी वजह से हम टूर्नामेंट के पहले वो श्रीफल अर्पण करते हैं, गणपति बाप्पा और सरस्वती की वंदना करते हैं और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की इस भूमि को नमन करते हैं हम सीजन के पहले कि किसी भी तरह से किसको कोई सीरियस इंजरी ना हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. नथिंग टू वरी. पच्चीस गेंदों में 38 रन बनाने हैं.
ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 24 में 36 चाहिए। हेलो, चौबीस में 36 चाहिए। सोलह के बाद 152। Oh, that's well bowled. Required run rate 9.13, 23 balls and 35 runs required. Oh, that's a very ordinary piece of fielding, and that could be the game-changing moment. That's a game changer. Rhythm Mobile's a boundary. Karan Singh Wale is on to 31 of 17. The required run rate falls down to less than 9. 22 balls and 31 required. अच्छी वापसी की दीपन ने, गेंद नीचे रही, डॉट गेंद। 21 में 31 रन बनाने, 21 balls, 31 required. Oh, how could that miss the stumps? Oh my God, he's so fortunate to be still at the wicket, Karan Singh Walia. That was the arm ball kept a little low. 1 run in the form of a bye. There you go, the replay. Interesting to watch.
Oh, that could have hit the fourth stump. 20 balls and 30 required. Welcome to Prince. That goes into the boundary fence. Sushil Gautam. 162 for 3. $19 balls and 26 required. उन्नीस गेंदों में 25 बनाने हैं. Two dot balls on the trot. Score after 17 overs, 163, 18 balls and 25 runs required. 18 में 25. करण सिंह वालिया के बैटिंग कोटा में वो काफी गेंदें बाकी है, तो उस लिहाज से उस सोच को नहीं दोहराना है. 18 में 25 बनाने हैं. अठारह मिनटों में 3 ओवर्स को मुकम्मल करना है. Manish Desai into his last over. Man on strike, Karan Singh Walia. At the non-striking end, Sushil Gautam. 18 balls, 25 required. Will be a wide one. 18 में 24.
थोड़ा सा क्रॉस बैट के साथ खेला है, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 2 रन्स मिले। As straight as an arrow. And Dipan Patel misses it. Rhythm Mobile's a boundary. The heads are falling for Team Superstars. Required run rate 6.75. Dr. Jay, our physiotherapist, has been tested no ends tonight. Sola में 18. Dot ball. पंद्रह में 18. Very slow to the air. They're looking for the second run, and they might get it comfortably in the end, and they get it in quick time. 172 for 3. Karan Singh Wale on to 39 of 23. The required run rate has dropped down to 6.38, 6.86. 14 balls, 16 required. तेरह में 15. Current run rate 9.70. Required run rate 6.92. 13 balls, 15 is what they want to go past the winning post. 1 ball left in over number 18. Manish bowling the last ball of his spell. Absolutely in front of the wicket. The good news for Team Gangsters is that Karan Singh Walia will be on strike. What was he doing there? Walking into that shot, looking to take a single, which should not have been the case. Either he should have gone for that big shot. Jensen LED lights, Gandha Royal Refinery wicket. Anil Jain goes in. Dokani is also padded up. If the need be, he will go to the wicket as a warrior. Manish picked up a wicket, but he's given away 46 runs. Generally, he gives away 20-25. Double the runs he's given away tonight. What expensive, which is such a rare sight.
The boundary that Sushil hit, that was also quite an important one. The penultimate over being bowled by Dipan. Dipan's 3 overs have gone for 33. Oh, Gopal bhai, well done. He's been right on the money this evening, Gopal bhai. 11 में 14. This is what is expected of Anil. Scoreboard moving ahead in the form of singles. नौ में 12. That's well struck. Oh, that is a brilliant effort. Brilliant effort by Munir. He prevents a boundary. Still a ray of hope. That's extraordinary fielding by Munir. A Kodak moment. That's a 24-carat gold knock from Karan Singh Walia. And what an effort by Munir. Super effort. 7 में 9 चाहिए.
6 balls and 7 runs to win the match. 6 balls, 7. Collie wobbles in the stomach. Tension in the air. 6 balls and 7 runs. The match is more close than what it looks like. Tomorrow's match, challenges and ace charges. Tomorrow's 7 p.m. Challenges and ace charges. Manish Sharma. That's the assignment that has been given to Anil Jain to take the singles and give the strike to Karan. Karan Singh Wali on to 46 of 28. 6 balls, 6 runs to win of 5 balls. That's a very good delivery. Well bowled. Fight to win of 4 balls. Oh, this could be close. We'll have to wait and watch. That's a good run, good effort there. Everything happening out there. Tension in the air. They've picked up 3 singles of the first 3 balls. And to the credit of Manish Sharma, is putting the ball in the right area. Is releasing the ball nicely. Under tension, under pressure, is doing a decent job. Manish Sharma looking to take the match deep. 3 में 4. ओ बढ़िया फील्डिंग, क्या बात है, क्या बात है.
रोमांच बरकरार है, कहीं पर भी मत जाइएगा। Parul Manish Mehta cannot believe her eyes. Oh! That's been referred upstairs. What a collection by Vipul Gala down the leg side. Anil Jain knows that is out. He knew it. What a dream collection down the leg side by Vipul, adding to the drama. दो पे दो. विनोद डोकानिया, जिस तरह से मनीष देसाई ने स्पिरिटेडली वापसी की थी, उसी तरह से विनोद डोकानिया इस प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही बड़े फोर्स के साथ वो गेंद उनके छाती में आई थी, उसके बावजूद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। So he gets those good marks for that arrival at the wicket, but the tension of the match is a different ball game. 2 balls and 2 runs to win. What a cricket match. 2 runs to win of 2 balls. Oh, that's a dot ball. A twist in the tail. Twist in the tail. क्या बात है. What a cricket match. And मनीष शर्मा की दाद देनी होगी. Under pressure. मानो कि वो अपना चौथा ओवर कर रहे. इस तरह की गेंदबाजी पेश कर रहे. क्या रिदम स्ट्राइक किया मनीष ने. जैसे कि एक प्रतिदिन हर रोज से कम 40 से 50 गेंद फेंकते होंगे. इस तरह की गेंदबाजी पेश की है. अपनी बल्लेबाजी का फॉर्म गेंदबाजी में भी कैरी किया है. कुछ भी हो सकता है दोस्त. अगर ऊपर वाला है तो फिर वो टाई होनी चाहिए ये मैच. If there is a divine intervention, this has to be a super over. Never mind, even if we have to go home beyond the midnight. मेरे अगल बगल में जो लोग हैं वो खुश नहीं है मुझसे. क्या क्रिकेट मैच हुआ है. ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल. एक गेंद में 2 रन्स बनाने हैं. विपुल गाला ने कम से कम 50 बार वो रूल्स पढ़े होंगे, लेकिन टेंशन इतना है कि फिर भी एक बार कंफर्म कर लिया. अगर आपका दिल थोड़ा सा भी कमजोर है तो आगे जो हो रहा है वो मत देखिए. Anything can happen. All the 3 results are possible.
Oh my God, can you believe it? Oh my God, this is unbelievable stuff. The man of the match has to be Manish Sharma. Do not look at the app. There's no ways you're going to be looking at the app. वो ऐप को बंद कर दीजिए यतीश. इससे बेहतरीन क्रिकेट मैच क्या देखने को मिल सकता है. This is unbelievable. Karan Singh Wale has been left high and dry at the other end. कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. वो जब सितारे गर्दिश में होते तो हर डाव उल्टा पड़ता है, वैसा ही कुछ होता हुआ. बाल बाल बचे, किस तरह से बचे पता नहीं. पूरी कायनात ने ये मन बनाया था कि इस मैच को टीम सुपरस्टार्स को जिताएंगे, वरना तो टीम सुपरस्टार्स का इस मैच को जीतने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता था. क्या पारी के लिए करण सिंह वालिया ने. दुर्भाग्यवश दैट हैज गॉन इन वेन, बट kudos to Karan Singh Walia for that kind of a knock. Ultimately, they get home by the scruff of the neck. Man of the match, Manish Sharma.
Parul Desai is over the moon. And why not? Why not? Yes, good evening, ladies and gentlemen, and the warmest welcome to the post-match presentation as we are done with match number 34. This has to be the match of the GSC. Yes, good evening, ladies and gentlemen, and the warmest welcome to the post-match presentation as match number 34 comes to an end. What a cracker of a game. Can we first up give a big round to both the teams for this pot boiler of a cricket match? This was like an anti-climax. Kaushik bhai, first of all, congratulations that we go back home without any serious injury. आज ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं है, but fortunately we go home without any kind of an injury. Terrific cricket match, the best match in the GSC 45 plus T20 season 7. Will have to be one of the best matches right through all the seasons. So terrific cricket match. It's time for me to invite Karan Singh Walia to please come up on stage and have a word or two with us. Terrific knock. Spare a thought for Karan Paji. After that kind of a knock to end up on the losing side, that is not the right kind of justice delivered. But yes, this is a cricket match. अनिश्चितताओं का खेल है. कितना भी प्लान कर लीजिए, ऊपर वाले ने जो सोचा है वो ही होगा. क्या कहेंगे पाजी? Congratulations, team superstars. I think you were the better team today.
हालांकि हम बहुत प्लानिंग करके आए थे और यश से मैं पूछ के भी आया था कि दीपेन को कहाँ मारना है, कैसे खेलना है, तो और आई थिंक वेल प्लेड टीम गैंगस्टर्स, आई थिंक यू प्लेड वेरी वेल। और ये मैच की हार का ओनस मैं अपने ऊपर लेता हूँ, बिकॉज आई नेवर रियलाइज्ड एंड आई नेवर फेल्ट, और मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं कि मिस्टर महाजन वो चौका रोक देंगे, और मैंने मतलब होप ही छोड़ दी थी कि चौका हो गया, नहीं तो मैं 2 भाग लेता तो आई थिंक मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो आई थिंक वेरी गुड फील्डिंग संजीव महाजन। तो और जिसको मेरे से बॉल लगी, आई एम वेरी सॉरी, हाथ जोड़ के, इस मैच में भी और पहले के मैचों में भी, और आगे भी लगे तो मंडल आपका भारी है और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब आपके जान और माल के सामान का कोई जिम्मेवार नहीं है। बट आई एम वेरी सॉरी, और क्या बोलूँगा, थैंक यू, वेल प्लेड। आई थिंक क्रिकेट का मैच था और ऐसे मैचों में ही मालूम पड़ता है कि स्टार और सुपरस्टार्स में फ़र्क, और आज ये टीम के हर प्लेयर एक सुपरस्टार की तरह खेला है, चाहे पीडी थे, चाहे दीपेन थे। आई थिंक बैटिंग में जैसे मनीष ने बैटिंग करी, और आई थिंक गिव अ बिग हैंड टू मनीष के आके इतनी प्रेशर सिचुएशन में लास्ट ओवर डालना और ऐसा कैच भी पकड़ना, नहीं तो प्रेशर में कैच ड्रॉप हो जाता है, मतलब शायद मैं भी होता तो मेरे से कैच ड्रॉप हो जाता वो वाला, बट इट वाज अ वेरी प्रेशर सिचुएशन। सो आई थिंक वेरी वेल प्लेड, और डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच आप ही हो इस मैच के। और संजीव महाजन, आप ग्राउंड के बाहर मिलना मुझे। तो ये थे करण पाजी उनके अनोखे अंदाज में। अब समय हो चुका है कि हम दीपेन पटेल क्रिकेट की पाठशाला को मंच पे बुलाए। दीपेन, बाल बाल बचे, हारे थे आप इस मैच को, ऊपर वाले ने आपको बचाया आज के दिन, लेकिन एक क्रेडिट आपको देना चाहूंगा कि आखिरी वक्त तक आप डटे रहे, मैच को छोड़ा नहीं, क्योंकि आप प्रोफेशनल आउटफिट है और आज आपने बताया कि कितनी भी टाइट सिचुएशन हो मैच में होप नहीं छोड़ना चाहिए, और आपके ओपनर्स ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की, सामने वाली टीम के 2 ओपनर्स ने उससे भी अच्छी बल्लेबाजी की, और मनीष शर्मा के बारे में भी कुछ कहिएगा। First of all, congratulations to the Gangsters team because they played absolutely well. We, at one point of time, we were like, you know, as you said, hope kare ki nahi kare. So it's not a, it's, this game was not about who won. This game was about how well we played together, both of the teams, I think, because just 1 run difference is everyone I think has played well, especially their openers, our openers, and finally Manish Sharma, he pulled it off. So he caught the nerve at the last moment, and I think credit goes to him for this last over which he has bowled very well. And I think otherwise the game was excellent and superb today. परफेक्टली सम अप किया इस पूरे मैच को दीपेन ने अपनी वाणी में। एंड ऑरेंज कैप होल्डर के लिए प्रसाद करकेरा, वो चांदप्रीत सिंह वालिया वो ऑरेंज कैप देंगे। करण सिंह वाले द ऑरेंज कैप होल्डर, 294 रन्स, क्या बात है। टू 94 रन्स। करण पाजी, हम हमेशा कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द लास्ट 2 सीजन्स, एंड वंस अगेन यू प्रूव अस राइट। जो मेहनत करते आप, वो मेहनत का नतीजा आपको मैदान पर नजर आता, हम सभी को नजर आता हुआ। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग, एज इज ओनली अ नंबर, ये आपने प्रूव किया है। मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी, गेम को इज्जत देनी पड़ेगी, सामने बॉलर को इज्जत देनी पड़ेगी, रोज़ सुबह आना पड़ेगा, रोज़ 100-200 बॉल खेलनी पड़ेगी और डिसिप्लिन से खेलनी पड़ेगी। इसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा अगर क्रिकेट खेलना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है। अगर टाइम पास करना है तो सभी लोग टाइम पास करते हैं, बट अगर आपको कंसिस्टेंटली खेलना है तो अपनी फिटनेस, अपनी प्रैक्टिस, अपने शेड्यूल, अपनी डाइट, सबके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तो ही होता है। और गेम को इज्जत देनी पड़ेगी, गेम से ऊपर कोई नहीं है। गेम को इज्जत देंगे, गेम आपको इज्जत बख्शेगी। थैंक यू। और ये कैप का मजा तब होता कि अगर हम जीत जाते, मतलब runs are immaterial, winning and losing is what matters. Absolutely well said. Everybody's on a song with those words. It's time for us to
Invite the man of the match award winner to please come up on stage. वो पहले announce किया मनीष शर्मा. चांदप्रीत सिंह वालिया वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे मनीष शर्मा को. What a hand he played, extraordinary performance. Manish bhai, you missed the last season because of an injury, लेकिन क्या भरपाई कर रहे हो और दूसरे लोग को आप खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर रहे हो. Terrific performance, बैटिंग के कॉन्फिडेंस को आप गेंदबाजी में ले गए और बल्लेबाजी से वो 47 रन से ज्यादा जो आपने वो 6 रन बचाए वो ज्यादा मायने रख रहे. जो पहली 2 गेंदें आपने की ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से रिदम में और आप इस मैच का चौथा ओवर कर रहे हो ऐसा लग रहा था. जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ आपने दर्शाई. क्या कहूँ, ये टुडे वाज माय डे, सो मे बी एवरीथिंग फेल इनटू द प्लेस. सो वेल प्लेड गैंगस्टर्स, करण पाजी एंड आशीष, अविनाश जी, वेल प्लेड. थैंक यू. एंड मेरी टीम, special thanks to Mahajan. He saved the day for me. Thank you. थैंक यू मनीष भाई. इतना बेहतरीन मैच. कौशिक भाई कुछ कहिए. गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल तो विनोद इज परफेक्टली ऑल राइट. उससे शायद एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग सच अ गुड फिटनेस. एंड काफ़ी मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार 45 प्लस की मैच देखने की बहुत मज़ा नहीं आता. इट्स अ लिटिल स्लो गेम, वी डोंट एंजॉय. तो मैं उसको कहूँगा आज की मैच आप यूट्यूब पे जाके देखो. यू विल डेफिनेटली एंजॉय मोर देन द मेन लीग मैच, बिकॉज 1 रन से कोई भी टीम जीते और लास्ट ओवर तक अगर गेम चलती है तो इससे ज़्यादा क्रिकेट का मज़ा आपको और कहीं नहीं मिल सकता है. हमने तो हमारी गड़ियाँ मिला ली थी कि अभी सुपर ओवर देखने मिलेगा आज, बट थैंक्स टू मनीष भाई कि वो सुपर ओवर का टाइम हमारा बचा लिया. एंड हार्ड लक टू करण बाजी, ही प्लेड सो वेल. और हम सब ये सोच के बैठे थे 6 बॉल में 7 रन चाहिए, तो अभी पाजी भी क्रीज पर है तो शायद सुपरस्टार के लिए कुछ चमत्कारी जिता सकता था उसको, और शायद मनीष भाई ने वो चमत्कार कर दिया एंड सुपरस्टार वन द मैच. सो अल्टीमेटली मैं बिफोर आई क्लोज मैं अपने प्लेयर से इतनी रिक्वेस्ट करने चाहूँगा. सो वेन एवर वी स्टैंड फॉर द प्रेजेंटेशन, सो वी ऑलवेज सी कि भाई जो टीम जीती है ना वो उसकी फैमिली सब खड़े होते, बट जो टीम नहीं जीती है वो हाफ से भी कम टीम हमारे साथ होती है. तो मैं अपने प्लेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट प्रेजेंटेशन तक सारी टीम को रुकना चाहिए एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू यू नो एंकरेज. वी ऑल आर अ फेलो फ्रेंड्स. क्रीज के बाहर हम अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में रहते हैं. अगले साल कौन कौन सी टीम में होगा पता नहीं है, तो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ स्टे टिल एंड ऑफ द मैच एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Thank you. With this, we come to an end of this wonderful pot boiler of an evening. Tomorrow, 6:30 p.m. toss time is Chargers versus Team Challenges. Good night. God bless. Take care.